So very good evening to all of you and welcome to the first general parents meeting of GM-22. We'll be starting in the next couple of minutes. We're waiting for some more participants and more parents to join in. So we'll be starting in about a couple of minutes. Basically, today we will be briefing you on three major aspects. One is the GM-22 program updates, what all has happened so far, and what are the different systems which we have to put in place so that parents are fully aware about it. Secondly, we'll talk about what instructions we have given to students regarding how they must study and how they must schedule themselves for the day, so that you are also clear about what basically is the instruction coming from the institution to the students. And thirdly, about how this program is going to pan out in the next 1 year or so, what is the future plan, and in case you need any help, you wish to communicate with us on various aspects, what are the different communication lines available from our side to you. So all these things will be there in this particular presentation today. And then there can be a Q&A session. Whatever questions you have, whatever apprehensions you have as parents, feel free to express those. And you can shoot those questions or queries on the chat box. Even while the presentation is on, you can put those questions across in the chat box. But I will take those questions one by one after my entire talk is done. So this is basically the plan for the day. And then, once these things are clear, the basic objective of this exercise of conducting a parents meeting is so that all the three major stakeholders in this activity, students, yourself as parents, and we as an institution, all three stakeholders are on the same page. So there is no communication gap between the three of us. All of us speak in the same language, and then there is a coherence which is there amongst the three of us, so that the student achieves the objectives for which he or she has joined this program. So this is basically the agenda which we are having, and that's how we're going to be going about it. So just wait for one more minute and then we will start this presentation. Thank you so much. All right. So very good evening to all of you again, and welcome to this first general parents meeting. We'll start off this presentation now. Uh, as I said earlier, I will just reiterate something. The agenda for this meeting is so that all three stakeholders, parents, students, and the institution are on the same page, and there is no communication gap between us, so that there is clarity of purpose and clarity of process, so that we are able to achieve the objectives which are stated. We'll update you today on the program, how it has so far gone last 10 months, what all different systems we have instituted so that students can avail of them, what all has been accomplished, what we hope to accomplish in the next 1 year. All this will be clearly explained in this presentation. What instructions we have given to students regarding how to study, how to schedule themselves for the day, what are the priorities, how they should prioritize on different aspects. All this also will be shared with you so that you're also clear and so that you can have an intelligent conversation with your child whenever you have a dialogue with your child regarding the program and the progress of the child regarding the studies. And of course, thirdly, the future track and how this program is going to go in the next 1 year,
and its details, and also how you can communicate with us on various aspects. All these things will be explained in this presentation. So let me start off. Let me introduce myself. I guess we have already interacted before, but just as a formality, I am Durgesh Mangeshkar. I am the director and academic head of this institution for the last 19 years, and I will be leading this presentation today. Now let's look into the first slide. We have, because of the pandemic, as we are all aware, this program has so far gone in online mode, and it had to be conducted in online mode only. Till such time that this pandemic curve goes down, and the government permits us, and there is a general readiness among students and parents also to send the child to our institution, this program is going to be going online only. Our anticipation is that the pandemic usually goes in curves. So now it's on a rising thing. So it might peak somewhere in April and might taper down by May end or so. So hopefully by June, July, the second wave would be done, and we should be in a position to start full-fledged offline coaching by June, July. This is a hope which we have, and we are optimistic that we will be able to start offline coaching by around June, July. So, but till then, this program is going to go in online mode only. There is no option, and there is no permission from the government, and the current situation simply doesn't permit so. But in the last 10 to 11 months that this program has been run, we have given lot many features to students through the online coaching, and I'll be talking about those features also in this presentation. We have so far been able to complete around 40% syllabus for the M-Star, M and CSB students. This meeting today is exclusively for parents of students who are attending either the M-Star stream or the batch M stream or the career secure stream. All right. So basically, whichever batch you might be, career secure 1, 2, 3, whatever, or any batch amongst these three streams, then this meeting is relevant for you. So whatever I'm speaking is relevant for students and parents, especially parents who are basically representing the wards attending either M Star or M or CSB stream. Okay, for the Masters and Achievers stream, the meeting also already has happened yesterday evening, so that is done. So today's meeting is for M Star, M and CSB. The lectures have been conducted typically 6 days per week, 3 hours per day in split timings of 1.5 hours each. This has been by and large our modus operandi, and we have found that this optimizes learning outcomes because a lot of research has shown that 75 minutes to 90 minutes is the maximum attention span during online teaching of most students across the world. And therefore, we have 2 sessions of 90 minutes each, and that optimizes learning. And also by giving a gap between the two, there is a possibility of teacher giving homework which students can do, and so that there is continuity maintained from one lecture to the other. So this has been a fairly effective system is what we have found, and it does lead to very good learning outcomes. Now that we already have the results of the February JEE mains for your senior batch, that is GM-21, I can confidently state that any student who is sincere, who has followed all the instructions, has done exceptionally well. So in fact, the Pune girls topper is from our institution this year, and several students about 99 percentile have been recorded, more than 30 students in fact. And we have almost 356 students this year in the 2021 batch who have actually made the cut and who will qualify into JEE Advanced just by February exam. And all these students I'm talking about is because last one whole year they were also going through online coaching only, and all the critical topics were done in online mode for them, but yet this kind of result they have delivered, which means any student who is sincere can definitely derive a lot from the online systems and the online teaching process. And in fact, it's not just within our institution. I have analyzed the results across India of JEE mains February, because that's the first public exam whose results are known after all this pandemic in India. And therefore, we have found that the top 1 lakh students across the country have done as well as in the last 3 years the top 1 lakh students had done, which means in the top 1 lakh students के performance में ये साल और last 3 साल में अगर आप देखोगे तो कोई difference नहीं है, and across the country there was only online coaching available. So which means that for a sincere student, online coaching works as well as a offline coaching thing does. But as far as 1 lakh to 2.5 lakh students का अगर आप देखोगे तो there is a 15% drop in the performance this year as compared to the last 3 years. And if you see beyond 2.5 lakh rank, the performance of students this year is disastrous. Which means if a child is insincere, which is easily possible in an online coaching setup, then the performance drops very drastically. So this is also true. So it's all not about online and offline actually. It's about sincerity and insincerity. So if the child is sincere, then the child can manage it whether it's offline or whether it's online mode. And the child is insincere,
Then whether it is online mode or offline mode, it really doesn't matter. The child will continue to be insincere and not perform. Of course, in an online mode, an insincere student performs even more poorly as compared to the offline coaching. So these are the basic takeaways from the February results which we have had. And therefore, currently, this is the kind of system which we are putting in place, which is been proving very effective. DDS sessions, that is doubts and difficulties sessions, have been conducted every month, and typically for a span of 1 week before the monthly test. They have been conducted on Google Meet, and many students take advantage of that. DDS sessions give students an opportunity to ask one-to-one doubts. So there is already a 24/7 doubts forum on Google Classroom where the students can post their doubts and get answers within 24 hours. But besides that, a one-to-one interaction is facilitated by the DDS sessions. Then there are 7 monthly tests which we have conducted so far. For the students who have joined in the August 16th batch, the monthly tests conducted so far are 5 in number. The 9 fortnightly assignments have been so far conducted for the M-Star MCSB batches, but for those who joined in the August 16 batch, 7 assignments have so far been conducted. So this is basically how the progress has been. We have given to students so far 7 books from our side. And we have also given certain e-study material in PDF format, which has been posted on Google Classroom. So I will talk about which 7 books we have given to the students and what books we are going to be giving in phase 3 and phase 4 as well. So this is basically about the basic aspect of the program update. Some more aspects of the programs, what all has happened. As I mentioned earlier, we have already provided to students access to the online doubts forum 24/7. They can post their doubts. By doubts, they need not write in text. If suppose they see a question somewhere, they can take an image of that on their smartphone and then post it there. They can even scribble something and write something and then take an image of that and post it there. So there are multiple ways in which this doubt forum can work. And the teacher also can accordingly respond in any of these ways, so that there is a very good interaction, and whatever interaction happens between two students is public to every student of that particular Google class. So everybody can participate, even students can help each other to clear their doubts. So it's an online stream which basically goes on, and it's a very effective system. Those students who are utilizing it are finding it beneficial. But I would like to reiterate here that many students are not using this 24/7 online doubts forum, and therefore there has to be an initiative from the child to do so. Even when we organize DDS sessions, 100% बच्चे नहीं आते, 20% आते हैं, 30% आते हैं, बदलते रहते हैं अलग अलग. बट ओनली व्हेन यू हैव डाउट यू शुड कम टू द क्लास, ऐसा ही हम कहते हैं. लेकिन जेई का पढ़ाई ऐसा है कि यदि आप सिंसियर हो तो डाउट्स जरूर आएंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट्स आते ही नहीं. तो therefore doubts have to come, and this is very natural. So therefore it's necessary that students should participate in these doubt sessions, in the DDS sessions, in the online doubts forum, so that you are having reasonable clarity about whatever is happening in the chapters, whatever concepts are there, they get clarified. In case some problem is unsolved, that problem can be solved. All these things can be done. I already delivered one talk in the month of June. It was almost a 2.5-hour talk. My basic purpose of giving the career talk was to widen and give a broad perspective about the scope of the Grandmasters program. So it's not just restricted to when you learn in the Grandmasters program, you're going to clear a bunch of entrance exams and get admission to the IITs or some such prestigious college. This is not the only purpose of the Grandmasters program. There's a lot of things that you're going to take away from the program. And if you'll see across the world, out of 230 nations, here India is very well placed, and Indian students are very well placed to access the best global opportunities in research, innovation, and entrepreneurship as far as the current era is concerned. And therefore, we must capitalize on it. A strong foundation to capitalize those opportunities are basically provided by the Grandmasters program. This is basically what I tried to convey in that 2.5-hour talk. General study guidance has been continuously being given on WhatsApp groups to students as to how to study, what to prioritize. This has been given from time to time, and whatever has been posted by us in the students WhatsApp groups, this has also been posted on the ERP site. So the ERP site for parents, which is there, which parents can access, वो सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमने पेरेंट्स के ERP साइट में भी डाले हैं ताकि आपको पता चले कि हम बच्चों को क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. One-to-one counseling sessions have been provided on the need basis to students. Extra KVPY sessions have been provided, and 1,000 plus preloaded on-demand tests have been provided on Learn app. So this is basically there are almost 1,000 plus tests which have already been there on the Learn app, which is an LMS system which we use for conducting our tests. So students अगर किसी को chapter सिखा चुके हैं हम और कोई सब टॉपिक पे आपको टेस्ट देना है तो ये आप कभी भी देख सकते हो. Whenever you feel you are prepared for giving a test on that subtopic, you can give so. So these kind of facilities have already been given to students. Now
which are the books which we have given so far to students. We have given the Grandmasters Phase 1 guide. So the Phase 1 basically, which was conducted typically from June 16 to 28 September, or for the August 16 batch from August 16 to another 3 months from that around Diwali time. The purpose of the Phase 1 was to build a foundation. We didn't want to take you straight to IIT JEE levels. We first wanted to build some foundation and then go to JEE levels. So from Phase 2, we have started treating those chapters up to from JEE point of view. But the first 3 months, we had done a Phase 1, and it was a book which we had prepared, and we basically went through this book religiously. And the Phase 1 guide was basically the only textbook or the only book which we had asked students to refer in Phase 1. Once this foundation was built, then from Phase 2 onwards, the JEE level teaching started, and we provided them this book, which is a ICE book, in-class chapter-wise exercises. What it means is that कोई भी चैप्टर अगर हम बच्चा कर रहा है, तो these are the minimum set of questions which the child should be able to solve. We provide video solutions to these in our ICE books, also on our Learn app. So therefore, students are able to access the solutions to this also on the of the ICE book on the Learn app. General Organic Chemistry is a very important book which we have provided to students, because the foundation of organic chemistry is GOC, and GOC is quite a logical subject, a conceptual subject, and a deep subject. In fact, the level for of GOC in JEE Mains and JEE Advanced especially is up to BSc third year and MSc first year के level का GOC IIT के exam में आता है. And therefore, this 11th and 12th textbooks have all messed up, whether it's NCERT, whether it is state board, have all messed up this subject of organic chemistry. They directly go to product based chemistry with very little amount of GOC. But JEE has a lot of rigorous GOC, and therefore we have prepared a very good book for it by compiling the best resources across the world. And this was done 10 years ago, and we continue to use this book. So GOC is a book which students are still using, and once GOC is completed, then product based organic chemistry can easily be studied. Because अगर कोई unknown reaction भी है, तो उस unknown reaction के product predict कर पाओगे आप यदि आप GOC का background आपका strong है. अदरवाइज आपको लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शन ही पता होंगे, वो आप बाय हार्ट करोगे और उतना आएगा तो ही आप आंसर कर पाओगे. उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो आपको आंसर नहीं आएगा. तो ये तो कोई केमिस्ट्री सीखना नहीं हुआ. ये तो स्कूल और कॉलेज में केमिस्ट्री इस प्रकार से पढ़ते हैं, रट्टा मार के. रट्टा नहीं मारना है. यहाँ पे आईआईटी में सब लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, एंड देयरफॉर द चाइल्ड शुड नो हाउ टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रैक द क्वेश्चंस एज वेल. Homework book has also been provided. Solutions to the homework questions have also been posted on the ERP site. So teachers do ask students to solve questions from the homework book from time to time. 41 years के ये 3 बुक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है करंटली जो भी हमने बुक्स अभी तक दिए हैं उसमें से. एंड दिस इज द कॉमन मिनिमम टारगेट प्रैक्टिस विच वी हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू डू. तो कोई भी चैप्टर में मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक से करना है, तो 41 ईयर्स बुक से करना है. एज पेरेंट्स मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ाई करते वक्त देखोगे तो 80% ऑफ द स्टडी टाइम एट होम शुड बी यूटिलाइज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम 41 ईयर्स बुक्स. ये 41 ईयर्स बुक्स दिखते कैसे हैं, जरा आज बच्चे के स्टडी टेबल में जाके देख लो, और ये बुक में से कोई तो एक बुक उसके हाथ में एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है. इसमें क्या है, 41 ईयर्स मतलब क्या है कि हमने हर चैप्टर में लास्ट 41 ईयर्स में आईआईटी ने जो जो क्वेश्चंस उस चैप्टर पर पूछे हैं उसका कंपाइलेशन करके पैटर्न वाइज उस चैप्टर में डाला है, अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशंस. तो आप बच्चा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, और अगर उसको सॉल्व नहीं करने को आता है तो डिटेल सॉल्यूशन देख के सीख भी सकता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन मिनिमम टारगेट प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स. तो कोई भी चैप्टर में जब अगर बच्चा 41 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिया तो उसको फर्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी उस चैप्टर में आ जाती है. और ये बात हमने बताने के बावजूद काफी बच्चे 41 ईयर्स बुक्स को उतना सीरियसली कर लेते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं. ये गलती हो रही है. मैं हर साल लास्ट 19 साल से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हम इस गाइडलाइन स्टूडेंट्स के बिहेवियरल पैटर्न को हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार आप पेरेंट्स जरा बच्चों से जरा एक एकेडमिक डायलॉग करिए. आपकी आज मीटिंग में मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा टू स्ट्राइक इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन विद योर चाइल्ड. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. हम काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आप 41 ईयर्स में से क्या क्या कर रहे हैं, और 41 ईयर्स छोड़ के कुछ फलाना फलाना किताब से कुछ आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है. तो प्रैक्टिस के लिए 41 years is extremely important. I don't want to repeat myself again and again, but this is an extremely important aspect, and therefore parents and students must take cognizance of it. हाँ, एच.सी. वर्मा नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी बुक है फिजिक्स में, बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर बुक है. लास्ट 30 ईयर्स से आईआईटी एक्सपीरियंस इंडिया में यूज करते हैं. तो एच.सी. वर्मा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हमने पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम में पोस्ट किए हैं.
फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई टेक्स्ट बुक हमने रेकमेंड नहीं किया है, बिकॉज मार्केट में कोई भी प्रॉपर फिजिकल केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। इसलिए IIT-PK ने हमारे PDF फॉर्मेट में नोट्स चैप्टर वाइज गूगल क्लासरूम में हमने पोस्ट करते आ रहे हैं। इसके आगे फेज 3 फेज 4 में हम कौन से बुक्स देने वाले हैं? हम जेई कंपेंडियम देंगे। 450 पेजेस का एक बुक होता है, उसमें पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, क्विक ट्रिक्स, चार्ट्स, माइंड मैप्स, ये सब का एक ब्यूटीफुल कंपाइलेशन हमने बनाया है। तो एग्जाम के पहले अगर एक बच्चा कंपेंडियम पढ़ के जाता है तो उसका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। तो ये जेई कंपेंडियम हम बच्चों को अप्रैल एंड में दे देंगे। Concise Inorganic Chemistry is another very important book which will come from IIT-PK to you, because inorganic chemistry एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वैसे देख अगर बुक पढ़ने को जाएगा तो जाएंगे तो 1000+ पेजेस के किताब अवेलेबल है, उतना पढ़ना संभव नहीं होता, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक कम और मेमोरी ज्यादा रखती है। तैरपर हमने कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स पढ़ाए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको तो बच्चा कर ले, और फिर भी 200-250 पेजेस की किताब वो होती है, और उतना बच्चा भी कर लेता है तो फिर काफी एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन क्रैक कर सकता है। 12 बोर्ड्स के नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, सीबीएसई वालों के लिए अलग, स्टेट बोर्ड वालों के लिए अलग हम देने वाले हैं। कोई आईसीएसई का बच्चा हो तो आईएससी के लिए भी अलग हम लोग नोट्स देते हैं। तो दिस नोट्स विल आल्सो बी शेयर्ड विद स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ मई और जून। बिट सेट का सेल्फ स्टडी पैकेज, बिकॉज बिट्स पिलाने के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए नोट्स इस सेल्फ स्टडी पैकेज में रहेंगे। पेरिफेरल टॉपिक्स के लिए नोट्स भी रहेंगे। पेरिफेरल टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जिसमें जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में होते हैं, तो ये पेरिफेरल टॉपिक्स के नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। जेई मेंस मॉक टेस्ट बुक, जेई एमएसटी मॉक टेस्ट बुक, ये सब लेटर स्टेजेस में हम देंगे। तो ये फेज 3, फेज 4, फेज 5 में ये बाकी के बुक्स बच्चों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। Now, which are the online platforms which we are using? This also parents should be aware of. Most of you are already, but for the benefit of all parents, I am giving you this clarity. We are currently in the online coaching. We are using Zoom cloud meetings for delivering live lectures. So, our live lectures, which are interactive, are all delivered on the Zoom app. Right now, the same app we are using for this presentation as well. Now, for this meeting today, Google Meet is basically used for DDS sessions. And Google Classroom we are using for study material as an online doubts forum and for assignments. Assignments are auto evaluated and detailed solutions are also posted. So every 14 days we are basically posting an assignment for students to submit, and once they submit it, they are auto evaluated and given the next day. Then we have the Learn app, which is our LMS system, and in this Learn app basically we are able to conduct live tests. We are able to also upload on the Learn app the video solutions of the ICE book. We are also giving, there are also preloaded on-demand tests on Learn app, which students can give anytime when they want. From this March test onwards, we are conducting the test live on a Sunday once a month, but also we are doing proctoring. So basically Zoom se proctoring bhi kar rahe hain, so that students do not indulge in malpractices. They don't talk during the test, then 2-3 friends don't gather together and do writing the paper together, or they don't copy, they don't read. So we are able to look at the child when the video is on. So basically it's a live proctor test which we have started this system from March onwards. This has been a fairly effective system for the senior batch GM-21. Last 6 months we have been doing live proctor tests for them since November 2020. So for the GM-22 students, we have started live proctoring tests from this last Sunday onwards. ERP website is also another important aspect, where we post the homework book solutions at the same time for parents to know about program updates, performance reports of your child. This is a very useful site. तो आपको बच्चे के assignment marks, test marks कभी भी by just a click of a button मिल सकते हैं। आगे चल के जब अलग-अलग एग्जाम्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, जेई के आएंगे, बिट्स पिलानी के आएंगे, वेल्लोर के, मणिपाल के, उसके एग्जाम अलर्ट्स भी हम ERP साइट पे आपको update करते रहेंगे. So therefore this is an important site. I would request that parents access this site at least once in a week, so that you are also staying abreast of the developments in this program. Of course, we have made WhatsApp groups for general announcement, general guidelines and general guidance. Even I have put a lot of voice messages to guide students as to what to do, what not to do. Sometimes students get depressed, sometimes students get frustrated because 10th standard तक बच्चों को मैंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद मुझे मार्क्स तो मिलने चाहिए परीक्षा में, तो परीक्षा में मार्क्स मिलना मतलब पढ़ाई करना, ये होता है। वेयर जेई के टेस्ट में ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज के टेस्ट कैसे होते हैं, नॉन कंसेप्ट्स नॉन प्रॉब्लम्स वाले होते हैं। जेई के टेस्ट कैसे होते हैं हमारे, या एक्चुअली जेई में नॉन कंसेप्ट्स अननोन क्वेश्चंस वाले पैराडाइम होगा।
So therefore the questions which they will see in the exam may not be familiar to them. They may not have seen those questions. There will be new questions but based on the same concepts taught to them. And therefore वहाँ पे बहुत presence of mind exam में लगता है. So it's not just knowledge which counts and which actually translates to marks in the monthly test, but along with knowledge you also need what is called exam temperament and exam strategy. अभी तक बच्चों का एग्जाम टेम्परामेंट नहीं बना है, एग्जाम स्ट्रेटेजी नहीं बना है, इसलिए काफी बार आप बच्चों से को देखोगे कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं मिला पा रहे हैं, एग्जाम में कुछ तो ब्लैंक आउट हो जाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं आया वो घर पे आके उनका सॉल्व हो जाता है, काफी बार जो चीजें आती थी वो भी गलत करके आ जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, समहाउ मार्क्स कम आते हैं। तो बेसिकली पढ़ाई करने के बावजूद मार्क्स नहीं मिलते, इसकी वजह से बच्चे को सेटबैक मिलता है, डिप्रेशन होता है। ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना जेईई एस्पिरेंट्स के साथ पूरे इंडिया में लास्ट सालों साल हो रहा है, हम भी लास्ट 20 साल से यही देख रहे हैं। तो ये फिनोमेना है, इसको हमको समझना चाहिए कि ये स्कूल या कॉलेज में जैसा सिचुएशन था एग्जाम्स का वैसे नहीं है, और ना ही यहाँ पे 90% या 80% मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक 35%, 40%, 50% मार्क्स भी बच्चे को मंथली टेस्ट में मिलते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज अ गुड स्कोर। सो देयरफॉर इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से देना है। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको कुछ नंबर्स भी शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया आएगा कि किसी परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे तो उसको देखना कैसे है, क्या बेसिकली उसका उद्देश्य है। और हमारे मंथली टेस्ट इस बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है, बच्चों को सीखने का मौका मिलने के लिए कि इन द टाइम प्रेशर in an exam which is a high stress situation where there is time pressure, you have to solve the question within 2 minutes, 3 minutes, and there are questions from all the chapters and all 3 subjects together in 3 hours. How does the mind work of the child? बच्चा उस स्ट्रेस को झेल पा रहा है कि नहीं, या वो किस प्रकार की गलतियां कर रहा है, इससे सीखना है बच्चे को। So the purpose of test is to learn. वो अच्छे मार्क्स मिले, बुरे मार्क्स मिले, इससे एक इमोशनल रिएक्शन देके बैठना, ये इमेच्योरिटी हुआ। So therefore students को basically as parents also आप इसको काउंसिल करिए, हम तो करते ही हैं कि परीक्षा को सिर्फ मुझे कितने मार्क्स मिले, मेरे फ्रेंड्स को कितने मिले, मुझे अच्छे मार्क्स मिले एज कंपेयर टू फ्रेंड्स, देन आई शुड बी हैप्पी, या मेरे फ्रेंड आगे चला गया देन आई एम अनहैप्पी, या मेरा रैंक अच्छा आया तो आई एम हैप्पी, इफ आई रैंक अच्छा नहीं आया तो आई एम अनहैप्पी। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन देके रुकना, ये बहुत इमेच्योर चीज हो जाता है। इवन आप टॉप करते हो हमारे टेस्ट में, और अगर आप हमारे टेस्ट के सॉल्यूशंस को एनालाइज करके सीखते नहीं हो, then the purpose of the test stands defeated. This is what I basically believe. That's why test should be used as a learning opportunity and not just to evaluate your results and ranks and feel happy or sad. So basically these are some of the broad ideas which we have done. These are the platforms which we use, and ये 6 platforms use करके we are able to render this online program very smoothly and very seamlessly. जनरली मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में सब जगह ऑनलाइन कोचिंग ही चल रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स नहीं होते, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाते हैं। सो जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाता है एंड दैट्स इट, एंड बच्चे ने वो पढ़ना है, और बाद में फिर उस पर डाउट्स अगर आते हैं तो फिर वो बाद में टीचर्स को पूछना है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं इनइफेक्टिव मेथड है, ऐसा मैं समझता हूँ, because live interactive lecture में सब मैजिक होता है। Students can actually ask doubts via chat box or by raising hand, and students can get an opportunity to speak out whatever they are having as a doubt or whatever during the lecture. That makes a big difference in the whole stuff. We are also giving recorded lectures to students. Live lecture का recording मिलता है, but उसी दिन नहीं मिलता है। Now there is also a question in the minds of some parents and students कि आप उसी दिन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देते हो, आप संडे को पूरे वीक का रिकॉर्डिंग क्यों देते हो। तो उसका कारण ये है कि यदि हमने लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग उसी दिन दे दिया तो स्टूडेंट लाइव लेक्चर क्यों अटेंड करेंगे। देखो बच्चों की साइकोलॉजी भी समझना जरूरी है, ये बहुत ट्रिकी है। ये एक्सपेरिमेंट्स बाकी जगह पे किए हैं, हमने भी हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ लेवल पे किए हैं पहले, कि अगर हमने लाइव लेक्चर किया और उसका रिकॉर्डिंग इमीडिएटली दे दिया तो बच्चा लाइव लेक्चर को ही बंक करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। क्यों, हमको तो मिलने वाला है रिकॉर्डिंग, तो व्हाई शुड आई पे। और या लाइव लेक्चर अटेंड करता है लेकिन द इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन वो रिड्यूस हो जाता है। सो दैट रिसेप्टिविटी का जो एक फोकस होना चाहिए क्लास में लाइव लेक्चर में वो कम हो जाता है। अगर बच्चे को पता है कि मुझे ये लेक्चर वापस मिलने वाला नहीं है, ये एक हफ्ते के बाद मिलेगा या 4 दिन के बाद मिलेगा, सो देन द इंटेंसिटी ऑफ फोकस इज हायर। और ये हमने काफी बार देखा है। देखो दिस इज अ मैटर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी डिले गिविंग द रिकॉर्डिंग लेक्चर एंड गिव इट ओनली ऑन अ संडे and we keep it for 30 days and then we delete the recording. This is basically how the process is. पूरा सिलेबस होने के बाद बच्चों को पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास अलग रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो हम बच्चों को देने वाले हैं पूरे। तो दैट टाइम एनी टॉपिक वेयर कुड बी रिकॉर्डेड लेक्चर उनको चाहिए तो इमीडिएटली विद द टैप ऑफ अ बटन आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द रिवीजन फेज फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टिल मे।
2022. तो लास्ट 7 months में उनके पास पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग ऑन द टॉप ऑफ द फिंगर्स रहेगा. बट राइट नाउ दे शुड बी अटेंडिंग द लाइव लेक्चर्स विद लॉट ऑफ फोकस. एट द सेम टाइम दे शुड बी एक्सेसिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर in case they could not understand a few things in the live lecture, and this is basically where the whole thing comes. Then it becomes very effective. अगर हमने infinite time के लिए उनको recorded lecture दे दिया, not just 30 days, then again they will become complacent and they may not refer to it. बाद में देखेंगे, ये करेंगे, because procrastination is a general tendency which we have seen in many students while studying. So therefore this shouldn't happen. इसीलिए ये 30 days का भी clause हमने रखा हुआ है. Another very important point is I would like to share is the differences and the pros and cons between online coaching and offline coaching. देखिए, ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप देखेंगे 1 hour ऑफ लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन लेक्चर एंड 1 hour ऑफ ऑफलाइन लेक्चर, दैट इज क्लासरूम लेक्चर, इसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? क्लियरली ऑफलाइन लेक्चर ज्यादा इफेक्टिव है. सो आई कांटेक्ट होता है, टीचर बच्चे का बॉडी लैंग्वेज देख के पढ़ा सकता है, सो डेफिनेटली बेटर ऑर्केस्ट्राइजेशन, बेटर कस्टमाइजेशन होता है, एंड ऑफलाइन टीचिंग इंपैक्ट इज फार मोर एज कंपेयर टू अ लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन लेक्चर. बट ऑफलाइन लेक्चर में रिकॉर्डिंग नहीं मिलता. ऑनलाइन का लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर में साथ में रिकॉर्डिंग भी मिलता है. तो यदि आप लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर प्लस रिकॉर्डिंग को कंपेयर करते हो 1 hour ऑफ फिजिकल क्लासरूम कोचिंग में के साथ, सो देन देयर इज सम पैरिटी व्हिच कम्स इन बिटवीन द टू. सो देन इन दैट केस द लर्निंग इंपैक्ट और द टीचिंग इंपैक्ट बिटवीन द टू के बीच में का जो डिफरेंशियल है वो बहुत कम हो जाता है. ओके, एक चीज ऐसी है ऑफलाइन कोचिंग में जो ऑनलाइन कोचिंग के पास बिल्कुल नहीं है, और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है पीयर टू पीयर लर्निंग. सो बेसिकली जब हम ऑफलाइन कोचिंग या क्लासरूम में कोचिंग कर रहे हैं तो बच्चे बाजू बाजू में बैठे होते हैं, एक माहौल क्रिएट होता है पढ़ाई का, और उस माहौल में जब पढ़ाया जाता है तो भी बहुत फर्क पड़ता है. प्लस बच्चे फ्रेंड्स इजीली बना लेते हैं, फिर उनके में डिस्कशन होता है, इधर उधर की बातें भी होती है, थोड़ी इमोशनल वेंटिंग होता है, थोड़े जोक्स होते हैं, और फिर उस हंसी मजाक में पढ़ाई भी हो जाती है. तो वो एक कमैरिटरीशिप समहाउ ऑनलाइन कोचिंग सिचुएशन में डेवलप नहीं होती. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड एज फार एज द टीचिंग पार्ट इज कंसर्न. बट इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट मतलब आप टेस्टिंग कर ले रहे हो, आप असाइनमेंट्स ले रहे हो, तो इफ यू लुक एट assessment tools between offline and online is far superior as compared to offline. हमारे ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम में वी आर एबल टू ट्रैक मिनट टू मिनट एग्जाम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. अभी इसके आगे हम लोग और एक एडवांस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बच्चों को एक्सपोज करेंगे, टिपिकली इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर. इट्स कॉल्ड MBITE, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टेस्टिंग सिस्टम. उसमें इतने एडवांस एनालिटिक्स है कि आपको मिनट टू मिनट बच्चे का एग्जाम बिहेवियर हम ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट में. ये हम ऑफलाइन कोचिंग में कभी ट्रैक नहीं कर सकते कि बच्चे ने कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए, कौन से बाद में किए, कितना समय कौन से क्वेश्चन पे दिया, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल टाइम एक्चुअली क्या होना चाहिए था, हैज द चाइल्ड स्पेंड मोर टाइम देन दैट और लेस टाइम देन दैट, एंड डिड ही गेट इट करेक्ट और नॉट. तो स्पीड पैरामीटर्स, एक्यूरेसी पैरामीटर्स, एंड अगेन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पैरामीटर्स, ये सब का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट से एंड असेसमेंट टूल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ऑफलाइन केस में बिल्कुल नहीं कर सकते. सो देयरफॉर what we have realized in this last 10-11 months of this pandemic situation is that the future part is concerned, we will have to deliver blended education. So there are some beautiful features of online and there are some beautiful features of the offline. We have to take the best of both and blend both and give you blended education. तो हम सिर्फ ऑफलाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ ऑनलाइन नहीं कर सकते, हमको दोनों करना पड़ेगा going forward. So let's pray that this pandemic situation gets resolved in the next 2-3 months and we are able to start full-fledged offline coaching, and we are also able to provide you all these online tools which also make it the whole program seamless along with this. All right, so this is basically how it is. So what is the future track? Basically till 31st March, that is month end, हमारा phase 2 complete हो जाएगा and phase 2 will get completed, and then April to 1 to 8 is a holiday break. Then from 9th April to October 31st, there is a phase 3 which will be conducted and the JEE advanced syllabus will be completed by end of October. So we hope to complete the JEE advanced syllabus teaching by end of October. 1st November to 7th November Diwali break, and then November 8 to January. See, I'm tentatively telling you January because the first JEE mains exam for 2022 कब होगा ये गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है. But I am anticipating it should be maybe January or February or around that time. So जब भी रहेगा, अगर फरवरी होता है तो हमारा ये फेज 4 फरवरी तक चलेगा, अगर जनवरी में होगा तो जनवरी तक चलेगा. That's basically what I am saying. And then typically फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हम फरवरी मार्च के समय ब्रेक फॉर 12 बोर्ड्स देते हैं. तभी बच्चे ने घर पे बैठ के 12वीं बोर्ड्स का हमने जो दिए हुए नोट्स है वहां से पढ़ना है, and then they will be easily able to do well in the 12 boards exam. April to May में phase 5 will be there with weekly test, problem solving sessions and doubt sessions will continue. Typically सारे एग्जाम्स May end तक खत्म हो जाते हैं. So this is the tentative plan of the program. अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में लास्ट ईयर जब पैंडेमिक का ईयर था,
तब ये सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होके सितंबर अक्टूबर तक ये सारे एग्जाम्स हुए। तो जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, देन द एमएचटीसीटी ऑल हैपेंड इन द सितंबर अक्टूबर पीरियड। सो हमारा कमिटमेंट तो मई तक ही था, लेकिन विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा फी वी कंटिन्यूड अवर कोचिंग टिल अक्टूबर. So basically, we gave lectures, we gave doubt sessions, we gave tests to students, and we helped them till not just the exams, but even after that, the results were out till they got a college seat. So which branch to choose, which college to go for, ये सब का guidance हम लोग दिसंबर तक देंगे. तो basically, our commitment is not till May or a particular time period. Our commitment is till all these exams get over and the students get an A grade seat or an A plus grade seat. So be rest assured about that. IIT-PK is an ethical organization as far as this is concerned. And we are passionate about building career. So definitely we'll be staying till the child gets a good seat. So this is definitely there from our side. Now, about study methodology. As parents, you must know कि हमने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पढ़ाई कैसे करना है. तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई है, 110 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, डीप है वो भी, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ में सिलेबस वास्ट नहीं है, इवन गहराई में भी काफी डीप है. तो इसको पढ़ाई कैसे करना है, इसके लिए हमने बोला है कि हर चैप्टर हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में, to develop the first level of mastery in that particular chapter, there is a 5-step algorithm which you have to go. So this is what we call as a study pentagon. So attend lectures and make lecture notes using colored pens, and also do all the homework which the teacher is giving to you in the class along with the homework book questions. तो ये फर्स्ट स्टेप है. तो लाइव लेक्चर्स को अटेंड करें. अगर लाइव लेक्चर में कुछ चीजें समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उसको भी करें, उसमें जो गैप्स है आपके अंडरस्टैंडिंग उसको फिलअप करें. और जब लेक्चर सुन रहे हैं तो मेक लेक्चर नोट्स यूजिंग कलर्ड पेन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप खुद का एक कलर कोड रख सकते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लगती है उसको आप रेड करो, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है उसको कोई ग्रीन करो या कोई और कलर करो. वो आपका खुद का कलर कोड आप यूज करें. बट व्हेन यू यूज कलर्स यू फील लाइक रिफरिंग टू योर ओन नोट्स, and when you make notes it really helps you to relate to that topic and the concept much better way. So basically this is what is the first step. Secondly, after the teacher has taught that particular concept or whatever, go to the recommended books. हमने कुछ recommended books बच्चों को खरीदने के लिए कहे थे. So there are some books like for example physics में DC पांडे के 5 volume set है, फिर मैथमेटिक्स में सेंगेज का तेवानी का किताब 5-6 volumes का सेट है. ऐसे हमने बच्चों को कुछ बुक्स खरीदने को कहे हैं. तो those books need to be bought and those books, अगर CSB के बच्चों के लिए शायद कुछ अलग बुक्स हमने बोले हैं जेई मेंस के लिए. So whatever books we have told you to buy, once उस बुक्स में से solved examples है तो 60 to 100 solved examples उस चैप्टर के उसने आपने करने चाहिए. तो recommended books का पर्पस क्या है? To read the theory if you have not understood some part of the theory in the class, and secondly go through solved examples. solved examples को देखने से उस टॉपिक का, उस कंसेप्ट का एक और फील आ जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू मस्ट नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम रेकमेंडेड बुक्स बट यू मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द 41 years बुक्स. देखिए ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर बहुत बच्चे बताने के बावजूद करते हैं, जो अगर आप पेरेंट्स आपके लेवल पे कभी कोई करेक्ट कर पाओ तो अच्छा रहेगा कि रेकमेंडेड बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने हैं. रेकमेंडेड बुक्स में हर एक चैप्टर में 500 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं. प्रैक्टिस 41 years के बुक्स में अराउंड 150 क्वेश्चंस है, सिंगल आंसर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर मल्टीपल चॉइस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. यदि आप करियर सिक्योर बैच के हो तो आपने सिर्फ सिंगल आंसर में क्वेश्चंस भी कर लिए तो सफिशिएंट है. एमएमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो चलेगा. लेकिन अगर आप जेई एडवांस के बैचेस में हो तो सिंगल आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी करना है. तो ये अराउंड 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर मिलेंगे. हम उसका सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं. तो ये क्वेश्चंस करने को हमने कहा है, इसको पहले करो, और ये करने के बाद अगर समय बचता है तो बेशक रेकमेंडेड बुक्स के क्वेश्चंस के पीछे भी जाओ. मैं ये क्यों कहता हूं? बिकॉज लास्ट 41 years में आए हुए आईआईटी क्वेश्चंस, AIEEE में आए हुए क्वेश्चन, जेई मेंस में आए क्वेश्चंस इन किताबों में पाए जाएंगे. वो अगर आपने कर लिए तो एक फर्स्ट लेवल ऑफ मास्टरी आ जाता है. वो क्वेश्चन को देख के ये प्रश्न नहीं उठता कि ये आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है, ये सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है, क्या बाहर का क्वेश्चन है. बिकॉज ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, तो आए हुए क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर का है और आईआईटी के लेवल का ही है. बट रिकमेंडेड बुक्स में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो जेई लेवल से काफी लो लेवल के हैं, कुछ जेई से भी हायर लेवल के हैं, कुछ सिलेबस के थोड़े बाहर के हैं, या कुछ क्वेश्चंस गलत भी है. और बहुत सारे, और इतने 500 क्वेश्चन होने की वजह से यू आर नॉट एबल टू डू दोस 500 क्वेश्चंस. अल्टीमेटली यू विल डू ओनली 100-150 क्वेश्चंस. फिर उनमें से कुछ कंसेप्ट पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और कुछ कंसेप्ट से आपने एक भी क्वेश्चन नहीं कर लिया. ऐसे एक लॉपसाइडेड प्रिपरेशन हो जाता है रेकमेंडेड बुक से क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो.
इसलिए 41 ईयर्स के ये क्वेश्चंस में से करेंगे, होते हैं सिर्फ 100-150 क्वेश्चन, और उतना करने से उस चैप्टर के सारे की कंसेप्ट पर एक तो क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सब कुछ टच हो जाता है, सब कवर हो जाता है। तो दिस इज अ फार मोर इफेक्टिव प्रैक्टिस। तो काफी बच्चे जो पढ़ाई करने के बावजूद भी मार्क्स नहीं मिला रहे ना, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि बिसाइड्स ऑफ कोर्स, मैंने एक कारण पहले बताया आपको कि एग्जाम टेम्परामेंट नहीं बना है, बच्चा एग्जाम में नर्वस हो जाता है, वो एक कारण हो सकता है। पर दूसरा कारण है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चा 41 ईयर्स की जगह पे रिकमेंडेड बुक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए उसका बैलेंस प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, सारे कंसेप्ट नहीं कवर हो रहे हैं, और उसके वजह से भी बच्चा काफी बार मंथली टेस्ट में परफॉर्म उतना कर नहीं पाता। ये सेकंड कारण है। फोर्थ चीज, टेक असाइनमेंट्स एंड टेस्ट एंड एनालाइज सॉल्यूशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे असाइनमेंट भी कैसे करते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं, डेडलाइन के एक दिन पहले सिर्फ आंसर की एक दूसरे का शेयर करके कुछ तो डाल देते हैं, या कुछ बच्चे सिर्फ एबीसीडी डाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट्स में। तो ये बात सही नहीं है। तो दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू। असाइनमेंट आपको दिया गया है कि क्वेश्चन सेट दिया है 75 क्वेश्चंस का, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स, 25 केमिस्ट्री, और उसमें आपको 14 दिन दिए गए हैं, और आपको बोला गया है कि अगर आपको कोई बुक रेफर करना है तो रेफर करो, कोई हर्ज नहीं है, बुक्स रेफर करके भी सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। असाइनमेंट करने से भी आपको लर्निंग होता है। लास्ट मोमेंट में सिर्फ फ्रेंड्स को पूछ के या यहाँ पे कॉपी मार के या कुछ तो एबीसीडी ऐसा कुछ तो रैंडम गेस करके आपका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला। असाइनमेंट आपके ग्रोथ के लिए दिया गया है, with the full faith and trust that you will not betray our trust and you will put your efforts and sincerely to try the questions in the assignment. So 300 मार्क का असाइनमेंट है, तो आपको उसमें से अगर आपने सिंसियरली काम किया तो 150 मार्क्स मिलना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ये असाइनमेंट देना चाहिए सिंसियरली, और बाद में हम सॉल्यूशन जब वहां पे अपलोड करते हैं गूगल क्लासरूम में, उसको एनालाइज भी करना चाहिए। लाइकवाइज टेस्ट भी सिर्फ दे के छोड़ना नहीं चाहिए कि कितने मार्क्स मिले और कितने नहीं मिले, कितना रैंक आया, कितना परसेंटाइल आया, और चुपचाप नहीं बैठना है। ये रैंक परसेंटाइल तो एक बात हो गई, अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रैंक एंड परसेंटाइल। अभी इंपॉर्टेंट है कि तुमने परीक्षा से क्या सीखा, कौन से प्रकार की गलतियां आपने करी, और वो गलतियां आपने कैसे सुधारने वाले आप इसके बाद। एंड वंस यू आर अवेयर कि मैंने ये कंसेप्चुअल मिस्टेक किया, मैंने ये टाइप का मिस्टेक किया, सो वंस यू आर अवेयर अबाउट इट, यू विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक इन फ्यूचर टेस्ट। सो बेसिकली द होल पर्पस ऑफ टेस्ट इज अ लर्निंग एक्सरसाइज, इसको भी करना है। इसलिए एनालाइजिंग सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे परीक्षा देना और 3 घंटे एनालिसिस करना घर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये भी कारण है कि सब्सिक्वेंट टेस्ट में वो इतना इंप्रूवमेंट अपना नहीं कर पाते। क्लियर डाउट्स ऑन डाउट्स फोरम एंड डीडीएस एंड डिस्कशन विद फ्रेंड्स एंड थिंकिंग योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ना ही हम लोग जब आईआईटी का पढ़ाई किया था 1990s में, तब इंडिया में कोई कोचिंग क्लासेस ही नहीं थे आईआईटी कोचिंग के लिए, तो ना ही डाउट्स फोरम हुआ करता था, ना ही डीडीएस सेशन हुआ करता था, ना ही कोई फ्रेंड ज्यादा होते थे जो जेई का पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाकी के फ्रेंड तो बहुत होते थे, लेकिन वो जेई का पढ़ाई नहीं करने वाले होते थे, तो खुद ही सोच के करना पड़ता था। लेकिन ये सोच के ये 1980s और 90s के आईआईटीएंस इतने स्ट्रांग बने कि टुडे ऑल यू सी इन ऑल दिस गूगल फेसबुक में जो डोमिनेट कर रहे हैं रिसर्च टीम्स, दे आर ऑल दीज आईआईटीएंस हु हैव बेसिकली डन दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो इसका लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल इंपैक्ट है। तो आज के तारीख में चलो आपको सपोर्ट सिस्टम है तो उसका इस्तेमाल करो, डाउट्स फोरम है, डीडीएस सेशन। अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, डाउट कुछ पूछेंगे ही नहीं, आएंगे, यू नॉट कम फॉरवर्ड, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। सो स्टूडेंट्स हैव बीन टोल्ड ऑल दिस थिंग्स। ये मैं पेरेंट्स को आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमने बताने के बावजूद कभी कभी कुछ बच्चे इसको फॉलो नहीं करते। तो कहाँ क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं ये पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए। इसलिए दिस इज अ 5-step एल्गोरिथम वी हैव गिवन टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द स्टडीज पार्ट। तो इसको रिलीजियसली फॉलो करना आवश्यक है। So once the child repeats this cycle for every chapter, then the first level of mastery in those chapters will be easily achieved. And as far as the second level of mastery is concerned, ये हम लोग फिर phase 4, phase 5 में नवंबर टू मई में हमारे जो एडवांस के सेशंस होते हैं उसमें हमारे एक अलग सा बुक है IMP करके, IIT मास्टर पैकेज, which is given to the JEE एडवांस बैचेस। वो सॉल्व करने से सेकंड लेवल ऑफ मास्टरी बन जाता है। सेकंड लेवल मास्टरी हो गया, then you can easily crack the JEE एडवांस्ड एग्जामिनेशन। तो स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट पर डे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस हमने बच्चों को दिया है। अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, till October 2021 the child is supposed to study only 1 subject per day on a 3+2+2 basis. What do you mean by 3+2+2? देखिए, हर स्टूडेंट का कोई ना एक सब्जेक्ट, कोई ना कोई 3 में से कोई तो एक सब्जेक्ट वीक रहता है। किसी का मैथ्स वीक हो सकता है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको 3 दिन देना है वीक में। सो इन अ वीक ऑफ 7 days give 3 days to the weakest subject and 2 days each for the remaining 2 subjects. तो यदि आपका फिजिक्स सबसे वीकेस्ट है तो फिजिक्स को 3 दिन दो, बाकी के 2 दिन बाकी केमिस्ट्री एंड इसको दो। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना कभी है फेज 4 से, जब रिवीजन फेज में होंगे नवंबर ऑनवर्ड्स तब करना है। अभी टिल अक्टूबर 1 सब्जेक्ट पर डे। दिस इज आल्सो अनदर थिंग व्हिच स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो। अभी और एक गलती बच्चे क्या करते हैं, ये स्वाभाविक है कि जो सब्जेक्ट उनको अच्छे लगते हैं या जो टॉपिक उनको अच्छा लगता है
उसी पर ज्यादा समय बिताते हैं. So they exactly do opposite of what we have told them to do. What we have told them to do is that you have to spend 3 days for the weakest subject. But वो जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, उसी पर 3 दिन 4 दिन देते हैं, और जो अच्छा नहीं लगने वाला सब्जेक्ट है उसको एक आधा दिन दे देते हैं. And then that weak subject becomes even weaker for them. And over a period of time they develop some kind of an apathy, some kind of an hatred for that particular chapter. And that doesn't help the cause of the child. Ultimately जो बच्चा जेई क्रैक करता है उसका पूरे ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एक इवन हैंडेड अप्रोच होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत लेवल का एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए. हाँ, यू कैन ऑलवेज हैव योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, you can always have your weakest subject, that is perfectly fine, but a basic level of expertise you must develop in all the 3 subjects, because ultimately JEE advanced में तो individual subject कट ऑफ भी है. तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, ऐसा नहीं चलेगा. तो उसके लिए जो वीकेस्ट सब्जेक्ट पर अगर अधिक समय दिया जाता है तो जो अच्छा नहीं लगने वाला सब्जेक्ट है वो भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और जो डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर है वो भी धीरे धीरे इजी लगने लगता है, इफ यू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेटजी व्हिच हैज टू बी यूज्ड, कि जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है या जो मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है उसको अधिक समय दो. द फेवरेट सब्जेक्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट को अधिक समय देना ये काउंटर प्रोडक्टिव है. ये पॉइंट भी समझना जरूरी है. क्लियर बैकलॉग ऑन संडे. जैसे जैसे भी सिलेबस बढ़ेगा तो वैसे वैसे आप देखोगे कि बच्चों का कुछ बैकलॉग भी बन रहा है, कि पहले कुछ तो चैप्टर्स हुए जिसमें ये 5 स्टेप एल्गोरिथम फॉलो नहीं कर पाए, तो उसमें वो आधा अधूरा रह गया है चैप्टर, लेकिन अभी हमारा इंस्टीट्यूट में अभी सिलेबस आगे चला गया तो मुझे करंट टॉपिक्स के साथ भी रहना है. तो हमने बच्चों को क्या बोला है कि बहुत ज्यादा आप बैकलॉग के पीछे मत भागो. मंडे टू सैटरडे में करंट टॉपिक्स के साथ रहो. करंट मतलब जो लास्ट 1 मंथ से पढ़ाया जा रहा है उसको हम करंट टॉपिक्स बोलते हैं. तो करंट टॉपिक्स के साथ रहना चाहिए मंडे टू सैटरडे. संडेज के दिन आप जो बैकलॉग बचा हुआ है उसको क्लियर करने का कोशिश करो. देखिए, पूरे 110 चैप्टर के 110 चैप्टर का मास्टरी किसी का नहीं होता. ये जेई एडवांस के दिन भी नहीं होगा. बट 110 में से 85 चैप्टर्स, 90 चैप्टर्स भी फर्स्ट सेकंड लेवल ऑफ मास्टरी तक आप आ जाते हो, then you are in a very good position to get a very good rank in the JEE Advanced and also in the JEE Mains. So basically point ये होता है कि अभी फिलहाल संडेज का दिन ही बैकलॉग क्लियर करने के लिए रखिए. एक तब सिलेबस अपना अक्टूबर तक होने के बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपको पूरे मिलेंगे. Even after that also, after board exams also, you can utilize the time to clear whatever backlog else, whatever may be remaining. So therefore there is reasonable time available. but अभी आप बैकलॉग के पीछे जाएंगे और करंट टॉपिक छूट जाएंगे तो तकलीफ है. So that won't help. It's like, हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करते वक्त तो आप सामने देखोगे ना कि क्या चल रहा है. You will not see in the rear view mirror and drive the car. So you can't do that. So basically rear view mirror में once in a while देखना होता है. तो संडेज के दिन आप ये कर सकते हो, but basically keep the focus on the windshield and in the what is happening in front of you. This is basically what we have told the students about the study methodology. फिर about the scheduling tips क्या बोला गया है कि भाई हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज एंड स्टडीज. ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी सोओगे, कभी भी खाना खाओगे, कुछ भी खाओगे और एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, और पढ़ाई का भी मूड आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं कर लिया, ये सब से भी काफी बच्चों का पूरा पढ़ाई में फर्क पड़ता है. उनका पढ़ाई कितना इफेक्टिव है, फिर परीक्षा में मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं, परीक्षा के मार्क्स में ट्रांसलेट हो रहे कि नहीं, ये उनके शेड्यूल पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है. So we have told students that इतना मेंटल वर्क करोगे और तो माइंड बॉडी बैलेंस के लिए 1 hour ऑफ सम फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी इज अ मस्ट. अभी करंटली कोविड टाइम्स है तो कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए विच इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड नॉट, ये आप सब भली भांति जानते हैं, तो आई वुड नॉट एलाबोरेट ऑन दैट. बट इसेंशियली घर पे बैठे बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. सूर्य नमस्कार कर सकते हो, 12 दो सेट्स कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो. जिमिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है. यू कैन प्ले अ स्पोर्ट ऑल्सो depending on how you where you stay and what facilities are there. So at least 1 hour you should spend on physical fitness. This is very necessary. Sleep only during the night. Some students burn the midnight oil, रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं. This is not recommended. नेचर का पूरा एनर्जी आपके साथ होना चाहिए, तो बी विथ नेचर साइकिल, दैट विल बिल्ड एनर्जी, अदरवाइज योर एनर्जी विल गेट ड्रेन. और मे बी दिस चिल्ड्रन आर यंग, तो मे बी 5, 6, 7 महीने मैनेज भी कर लेंगे, बाद में बट एसिडिटी बढ़ जाती है. लेट नाइट से फिर एसिडिटी बढ़ जाएगी, फिर इरिटेबिलिटी आएगा, फिर सिली मिस्टेक ज्यादा होंगे परीक्षा में, तो अल्टीमेटली इट इज काउंटर प्रोडक्टिव. So be with nature's cycle, sleep early, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock light should be off, get up early morning and then start your day. No nap during the afternoon, because बहुत सारे इनके एग्जाम्स आफ्टरनून टाइम में रहते हैं. सारे जो बोर्ड एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स है, these are all in the day time, मॉर्निंग या आफ्टरनून स्लॉट.
So the child's biological clock should be trained to be staying awake throughout the day. So throughout the day सोने की आदत नहीं डालनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई लास्ट एक साल ऐसा किया भी होगा तो हर्ज नहीं, लेकिन अभी करेक्ट करो, और अगला पूरा 12वीं का साल एक साल भर बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक शुड बी ट्रेन टू बी स्टेइंग अवेक एंड अलर्ट इन द डे टाइम। रात को सोना है सो जाओ, 6 घंटा है, 7 घंटा, 8 घंटा, जो भी नेचुरल स्लीप बच्चे की है वो लेने दो। हमने कहा है बच्चों को कि जेई के लिए 6 घंटा रोज पढ़ना आवश्यक है ऑन वीकडे, और संडेज के दिन 8 घंटा पढ़ना आवश्यक है। टोटल 42 आवर्स पर वीक का टारगेट रख सकते हैं अगर डेली टारगेट नहीं रखना है। सो इतना पढ़ाई करना, दिस इज बिसाइड्स द लेक्चर्स, बिसाइड्स द डीडीएस सेशंस, बिसाइड्स द कॉलेज में आप जो समय बिताते हो, इस सब के अलावा प्योर स्टडीज फॉर जेई ये 6 घंटा होना चाहिए। एंड 2 to 3 आवर्स सिटिंग से पढ़ाई ना, 6 घंटा कंटिन्यूस नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 घंटा पढ़ाई किया फिर ब्रेक लिया फिर बस 2 घंटा पढ़ाई किया, ऐसे। तो 2 to 3 आवर्स सिटिंग्स में ऑन अ स्टडी टेबल, लेट के सो के पढ़ाई नहीं करना है। एंड स्टडी टेबल पे हो तो 80% राइटिंग 20% रीडिंग, ये रेशियो होना चाहिए राइटिंग, बिकॉज सॉल्विंग ज्यादा करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट का एप्लीकेशन पर ज्यादा भर है पूरे जेई के स्टडीज में, आगे इंजीनियरिंग में भी। सो देयरफॉर यू शुड डू more of problem solving, maybe write some notes, whatever. So writing 80%, 20% reading, this is basically the ideal ratio. Restrict electronic access for leisure to one and अब ये वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया पे करना या फिर थोड़ा टाइम पास करना, ये हमारा सजेशन ये है कि 1.5 घंटे तो मैक्सिमम पर डे होना चाहिए, बट आई नो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू कीप अ वॉच ऑन द चाइल्ड। तो ये बहुत ट्रिकी है, और अभी तो हमारा ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, तो बच्चों को तो गैजेट्स लगते ही है, वो गैजेट को यूज करते करते कब वो अपना पढ़ाई छोड़ के किसी और टैब खोल के या कुछ और करना शुरू कर दे हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा, ये बात मैं मानता हूँ, और ये डेफिनेटली एक जेन्युइन हैजार्ड है। बट इसको हम बच्चों को ही अगर उनका बेनिफिट समझा सके, कन्वे कर सके, बार बार रिमाइंड कर सके कि तुम अपने आप से जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आपको आगे तकलीफ कम होगी। अगर अभी आप बच्चा डिसऑनेस्ट रहे तो चलो अभी थोड़ा सा आप तुम ऐश कर लोगे, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग के ईयर्स में एक तो एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो भी आगे बहुत तकलीफ होगी। सो इट इज बेटर इन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट दैट यू हैव, एंड उसके बाद तो उसको पूरा फ्रीडम मिलने वाला है वंस ही गोस टू अ नेशनली प्रेस्टिजियस कॉलेज, फिर हॉस्टल में रहेगा, तो देयर द चाइल्ड हैज ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड, नोबडी इज गोइंग टू कीप अ वॉच। बट ये साल भर एटलीस्ट द चाइल्ड शुड एक्सरसाइज सम सेल्फ डिसिप्लिन, और बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन से ही इसको कम रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये हम लोग तो मॉनिटर नहीं कर सकते, ना ही इंस्टीट्यूट ना ही पेरेंट्स, बियॉन्ड अ पॉइंट इट इज नॉट पॉसिबल। So यहाँ पे we have to go with the trust level of the child and convincing the child only and counseling the child about what is good for the child in the long term and what is not. अभी ये पूरे मंथ में don't have to keep the schedule very rigid. So basically थोड़ा flexibility ठीक है, 1 or 2 cheat days in a month is all right. You'll study a little less on a particular day. One day you don't feel like studying, you want to just enjoy and just no problem. Then utilize that day for fun and then refresh yourself and then next day onwards dedicate for studies. That's also okay. So ये अगर ऐसा करेंगे, थोड़ा अपने आप को allowance भी देंगे, plus एक broad schedule ऐसा follow करेंगे, then you will see that the learning outcomes become very good. Child का confidence बढ़ता है, problem solving, and everything starts falling in line. These are the 5 milestones which basically the Grandmasters program intends to achieve. देखिए ultimately इसका output एक A+ ग्रेड कॉलेज में, टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन मिलना, या फिर एक A ग्रेड कॉलेज में एडमिशन मिलना, ये तो अवश्य है, ये तो फाइनल आउटकम हो गया in terms of a seat in a college. But at a cognitive level, at a more finer level, at a more subtle level, these are the 5 major milestones which we feel the JEE's program can deliver, the Grandmasters program can deliver. The first is being able to understand the concepts 100%. In class 100% conceptual understanding. This phase is very important. मतलब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर चल रहा है, वो जो भी पढ़ा रहे हैं क्या मुझे 100% शत प्रतिशत समझ में आ रहा है क्या, ये बेसिकली बाय नवंबर 2020 तक ये लेवल डेवलप हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि जब स्टार्टिंग बच्चे ने ज्वाइन किया प्रोग्राम, जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, तो हो सकता है कि पहले महीना 2 महीना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इट्स ओके। बट फेज 1 में शायद आपने स्ट्रगल किया होगा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं समझने के लिए, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड तक जो लेवल होता है स्टडीज का और अभी जो होता है उसमें काफी डिफरेंस है। तो इट्स ऑल राइट इफ यू हैव स्ट्रगल, बट बाय नवंबर, बाय दिसंबर मैक्सिमम आपका जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल्स तो 100% होना चाहिए। दिस इज नंबर 1, फर्स्ट माइलस्टोन। ये अगर हो चुका है तो आपने अपना पहला माइलस्टोन क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज काफी बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो ये जेई वगैरह पढ़ाई नहीं करते, वो तो रट्टा मारते रहते हैं, रोट लर्निंग से ही पढ़ते हैं, बाय हार्ट करके ही पढ़ते हैं, ये खुद अंडरस्टैंडिंग इनको जमता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप आगे उनके हायर एजुकेशन के लिए रह जाता है, तो ये अभी ओवरकम करना अच्छा है, तो इसलिए फर्स्ट माइलस्टोन है। सेकंड, correlating what the teacher is teaching in the class with the what is presented in the recommended books. देखिए
जिस तरीके से वो टॉपिक को पेश किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, द अप्रोच माइट बी डिफरेंट। टीचर एक अलग अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, शायद किताबों में थोड़ा अलग अप्रोच में लिखा होगा, ये हो सकता है। बट आर यू एबल टू रिकंसाइल बोथ द अप्रोचेस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट भले ऊपरी ऊपरी लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे लग रहा है कि अलग अलग अप्रोच है, लेकिन फंडामेंटली बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग द सेम थिंग। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स उसी कांसेप्ट पर आधारित है। आई एम एबल टू कोरिलेट व्हाट द टीचर इज टीचिंग विद व्हाट इज गिवन इन द बुक्स। ये एबिलिटी अगर बच्चे में आ जाती है तो ये भी एक, इसको असिमिलेशन स्टेज बोलते हैं। ये पहला अंडरस्टैंडिंग है, सेकंड असिमिलेशन स्टेज है। तो ये स्टेज अगर बच्चे की आ जाती है, एंड दिस शुड हैव बीन अचीव्ड बाय लास्ट मंथ, फरवरी तक हो जाना चाहिए था, देन आल्सो दिस इज अनदर माइलस्टोन व्हिच आई बिलीव स्टूडेंट। अदरवाइज क्या लगेगा, इनिशियली लगेगा अरे टीचर तो कुछ और ही पढ़ा देते, बुक में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये कुछ एक दूसरे का कोई तालमेल नहीं लग रहा है, ऐसा फीलिंग इनिशियली बच्चों को आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो गहराई में जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, ये भाषा अलग है लेकिन फंडामेंटली कंसेप्चुअली सेम चीज बोल रहे हैं दोनों, और हमको समझ में अभी आ रहा है। तो ये कोरिलेशन होने का भी एक टैलेंट है, ये एक माइलस्टोन है, ये ग्रोथ का लेवल है, और ये बच्चा बाय दिस लास्ट मंथ तक अचीव कर जाना चाहिए था। तो जब भी आप बच्चे से आज अगर बात करते हैं तो बच्चों को ये पूछो कि ये फर्स्ट एंड सेकंड माइलस्टोन तो उसका क्लियर हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट से जब बात करते हैं तो पूछते तेरे मार्क्स कितने हैं, तुझे कितना रैंक आया, तेरा परसेंटाइल कितना आया, फिर तेरे उस फ्रेंड को कितना आया, उस फ्रेंड को कितना आया, हो गया पूरा सत्यानाश, पूरा बच्चे का एंथुसियाज्म डाउन, वो पूरा डिप्रेस हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड तक हमेशा टॉप करता था, 90%, 95%, 97% मिलाता था, और यहाँ पे तो 30% मिलाना भी मुश्किल हो रहा है, और क्लास में तो हम टॉप 100 में भी नहीं है, 200 रैंक है, 300 रैंक है, बोलने को भी शर्म आता है। तो आप ऐसे नब्स पे हाथ रख रहे हो बच्चे की, जो दुखरी नर्स है अभी, उस पर नहीं करना है। और ये अभी सभी के साथ ये होता है, कभी ना कभी होगा। आज जो बच्चा टॉप किया हमारे मार्च का टेस्ट में, वो शायद अप्रैल के टेस्ट में 23rd आ जाएगा, 45th आ जाएगा, ये होता है, ये ऊपर नीचे होने वाला है। टेस्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी अभी नहीं आती। अक्टूबर 2021 तक आपके बच्चे का मंथली टेस्ट का परफॉर्मेंस, आप कितना भी कोशिश करो, फ्लक्चुएट ही होते रहेगा या कम ही रहेगा। इधर इट गो अप एंड डाउन, और इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउन। ये दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। हमने हजारों बच्चों को लास्ट 19 साल में पढ़ाया है, और सभी के साथ हमने यही देखा है। ये टेस्ट परफॉर्मेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021-22 में, उसके पहले ही नहीं आएगा। वो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ माइलस्टोन है। तो पहले 2 माइलस्टोन होने के बाद एक थर्ड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आएगा, विच वी शुड एक्सपेक्ट बाय अराउंड जून 21, दैट इज 50% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 41 ईयर्स के किताब में 10 IIT लेवल के क्वेश्चंस बच्चे को एक चैप्टर पे देते हैं, जिसका पढ़ाई बच्चे ने किया है, एक चैप्टर बच्चों को हमने पढ़ाया है, बच्चे ने सीखा है, तो ये चैप्टर में से जो पढ़ाया है उसमें से अगर उसको 10 क्वेश्चन अगर हम देते हैं, तो इज द चाइल्ड एबल टू सॉल्व आउट ऑफ 10 5 क्वेश्चंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, खुद कर पा रहा है क्या, खुद क्रैक कर पा रहा है क्या? तो यदि वो 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 खुद क्रैक कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड 50% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हाँ, यहाँ पे सॉल्व करते वक्त एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होता है। हाँ, देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना शायद भूल गया, बता रहा हूं मैं आपको, कि जब बच्चे घर पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम 41 ईयर्स बुक्स या कोई भी बुक से, तो देन इन दैट केस दे शुड डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 5 मिनट देना है हर क्वेश्चन का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन के लिए 15 मिनट देना है। मतलब 15 मिनट में क्रैक मारने का कोशिश कर रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं हो पाया तो सोल्यूशन देखना है। लाइकवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर क्रैक होता है तो क्रैक हुआ, नहीं तो सोल्यूशन देखना है, और सोल्यूशन देखने के बाद सीखना है, और सोल्यूशन देखे बिना वापस सोल्यूशन लिखना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन टाइम बाउंड प्रैक्टिस आदत हो जाती है। अदरवाइज घर पे इत्मीनान से आप घंटों लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और परीक्षा में सडनली मन को बोलोगे कि 2-2 मिनट में 3-3 मिनट क्रैक मारना है क्वेश्चन, तो मन एडजस्ट नहीं कर पाता उस एग्जाम प्रेशर के लिए, और ब्लैंक आउट हो जाता है, और इसके लिए भी एग्जाम परफॉर्मेंस खराब। तो इसलिए घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस से क्वेश्चंस बच्चे ने सॉल्व करने हैं, ना कि अनलिमिटेड टाइम में करने हैं। और अगर टाइम बाउंड प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बच्चे ने घर पे लगाई, तो फिर वो एग्जाम में भी ज्यादा इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, और एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। So this is also another secret behind doing well in the test. So 50% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई होगी। आज के तारीख में बच्चों की 25-30% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही रहेगी। मतलब 10 क्वेश्चन दिए तो वो 2 या 3 ही क्वेश्चन क्रैक कर पा रहा है, बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के ही समझ पा रहा है। यही सिचुएशन अभी रहेगी। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, और 50% प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय जून तक आ गई ना, जून या जुलाई तक आ गई ना, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। उसके बाद का जर्नी फिर आगे स्मूथ हो जाएगा। देखो 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं है। तो देयरफॉर वो आपको जितना हो सके उतना बियॉन्ड 50% इंप्रूव करना है। जो यूजुअली आईआईटी में जो टॉप 100, टॉप 1000 रैंक तक आते हैं, उनका 75, 80, 85% प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहता है ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। दैट इज वेरी गुड।
but at least 50% is easily possible for all students up to June July 2021. उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट और भी होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे पुट इन एफर्ट एंड व्हाट इज द नेचुरल टैलेंट। टेस्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ी बात मैंने पहले ही कर चुकी है। मैंने कहा हूं कि अभी बच्चे को ये मत पूछो अरे तुझे मार्च के परीक्षा में मार्क्स क्यों कम मिले, फरवरी में भी तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। अरे लेकिन ये देखो कि हर परीक्षा अलग फिनोमिना है। हर परीक्षा, जैसे अभी हम थोड़ी ना विराट कोहली को बोलते हैं कि अरे तू उस मैच में तो सेंचुरी मारा था, इस मैच में तू जीरो में क्यों आउट हो गया। अरे हर मैच अलग है, हर प्लेयर्स अलग है, वो बॉल डिलीवरी जो डाला वो बॉलर ने हर टाइम अलग होता है, उस समय उसका मन की स्थिति क्या थी वो अलग थी। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम टेम्परामेंट, the state of mind of the child matters a lot in the JEE kind of test. It is not like board exam. पढ़ाई कर लिया है तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग है फिनोमिना, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ स्टोकेस्टिक फिनोमिना। सेकेंडली, हर एक मंथली टेस्ट में 70% सिलेबस अलग अलग रहता है, 30% कॉमन रहता है फ्रॉम वन टेस्ट टू द अदर, बट बाकी का 70% नया होता है। तो हो सकता है कि प्रीवियस फरवरी के परीक्षा में बच्चे ने अच्छा किया बिकॉज वो जो टॉपिक्स आए थे उससे बच्चे ने उस चैप्टर्स में प्रभुत्व मिलाया होगा, एक्सपर्टीज मिलाई होगी। मार्च के टेस्ट के चैप्टर्स उसने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए उसको मार्क्स कम मिल सकते हैं, ये भी कारण हो सकता है। सो देयरफॉर वी शुड नॉट होल्ड द चाइल्ड to task as far as the test performance is concerned, at least till August, September 2021. Let the child learn from the test. This is the basic thing which I would definitely like to tell all parents. I'm sorry. I just think I jumped the whole thing. Let me just go behind. Yeah. So this is the slide which we were at, no? The milestones thing. So this is the fourth milestone, and then the fifth milestone is learnability. Learnability क्या होती है? Learnability ये है कि ability of the child to learn by himself or herself without the teacher. देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो ये है चीज है कि ये एक एजुकेशन का या एक टीचिंग का एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सिकल एस्पेक्ट है। वो ये है कि ए गुड टीचर इज समटाइम्स अ बैड टीचर एंड अ बैड टीचर इज समटाइम्स अ गुड टीचर। अब बोलेंगे क्या, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये नॉनसेंस नहीं है, ये ऐसा है कि अगर एक बहुत अच्छा टीचर है तो वो बच्चे को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है, ब्यूटीफुली सिखाता है कि students they love their teaching, they understand what the teacher is teaching, but somewhere they become dependent on the teacher. तो अगर वो टीचर ना पढ़ा है तो फिर बच्चे को उस सब्जेक्ट समझता नहीं है, खुद कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, खुद दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिलता, खुद सीखने का पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज सब कुछ उस टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। A bad teacher is usually can turn out to be a good teacher because it will force that bad teacher will force the child to learn himself and herself, read the textbooks, try to scratch your head, try to understand it again and again, और खुद समझने को कोशिश करेंगे। तो देयरफॉर देखिए जैसे आईआईटी में भी ऐसी होता है, आईआईटी में तो हार्डली 10-20% प्रोफेसर्स जो होते हैं उनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, तो वो टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ाते नहीं है, थोड़ा बहुत 10% ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, बाकी 90% खुद कर लो, ऐसा ही बोलते हैं। तो खुद ही सीखते सीखते ये सारे आईआईटी के बच्चे फिर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, देयर लर्नेबिलिटी ग्रोज टू सच अ ह्यूज लेवल कि जिंदगी में कुछ भी खुद सीख सकते हैं। दे डोंट नीड अ कोच, दे डोंट नीड अ टीचर, दे डोंट नीड, दे आर देमसेल्व्स देयर ओन गुरु। सो देयरफॉर ये एबिलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज हायर एजुकेशन में आगे कोई पढ़ाने नहीं वाला, कोई आपके डाउट्स नहीं क्लियर करने वाला, कोई आपको काउंसिल नहीं करने वाला। यू हैव टू बी योर ओन टीचर, योर ओन डाउट सॉल्वर, योर ओन counselor, and therefore this is another last stage which we hope that by April-May 2022 at least decent levels of learnability student is able to develop, because once a child is able to learn on his own and learn to learn हो जाता है, that stage is fantastic। उसके बाद फिर the child is all set for higher education। So basically हमारा ग्रैंड मास्टर्स प्रोग्राम में सिर्फ कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एक सीट में एडमिशन मिलाना नहीं है, बट वी वेरी ऑनेस्ट हमारा ये 5 माइलस्टोन्स अगर बच्चे ने बना लिए ना, डेवलप कर दिए ना, देन आई नो दैट whether the child cracks the entrance exam or not, whether the child gets into a engineering college of a very high level or not, वो जिंदगी में definitely successful रहेगा। The child is bound to do excellently well if these 5 qualities are developed, these 5 milestones are crossed. So basically, as on today, the test performances, as I mentioned, shall fluctuate, and the test should be used as a learning mechanism for the time being. एक अगस्त सितंबर से हम इसको थोड़ा सा जजमेंटल आई से देखना शुरू कर सकते हैं, and then from November, December, January जब वीकली टेस्ट होंगे, that time you will see that the child's test performance stabilizes, and that's when we can actually judge the child, and we should actually work on exam strategies, work on exam temperament to improve the test performances also. So this is also important because till October the students are still in a learning phase.
नाउ इंटरप्रेटिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि ईआरपी वेबसाइट से आप बच्चों के असाइनमेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, टेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हर परीक्षा के बाद हमने आपको एसएमएस भी भेजा है रिगार्डिंग द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। फिर हम उसमें हर सब्जेक्ट में एवरेज क्या था, बच्चे का कितना स्कोर आया, बच्चे का परसेंटाइल कितना है, ये सब बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें देखना क्या है कि इज योर चाइल्ड स्कोरिंग, how is he scoring vis-a-vis the average score? As long as the child is by and large scoring above average, yeah, sometimes even if he falls below the average, but on a 3 to 4 or 5 test के basis पे, sometimes he's above average, sometimes below, that's okay. Around the average mark में बच्चा है या above average है, then there is nothing to worry so much, because यहाँ पे anyway सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे टॉपर ही रहे थे 10th स्टैंडर्ड में, सब ब्राइट बच्चे ही है, और उनमें अगर बच्चा एवरेज है तो भी अच्छा ही कर रहा है ओवरऑल लेवल। चेक परसेंटाइल टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चे का परसेंटाइल 35 से कम है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, मतलब हमेशा उसका परसेंटाइल 20 आता है, 15 आता है, 5 आता है, या 35 के नीचे हमेशा ही रहता है, लास्ट 5-6 टेस्ट से उसका 35 से कम ही है, तो दैट शुड बी नाउ आइडेंटिफाइड एज अ रेड फ्लैग, देन यू शुड ब्रिंग द चाइल्ड फॉर अ काउंसलिंग अपॉइंटमेंट। हाँ, कभी तो 65 परसेंटाइल हुआ, कभी 30 हुआ, कभी 90 परसेंटाइल हुआ, कभी 20 हुआ, ऑसिलेट हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है, ये कॉमन है, ये नेचुरल है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यू जस्ट रिलैक्स, दिस इज अ डिफरेंट फिनोमेना एज आई मेंशन। ये कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्क्स बढ़ते रहेंगे और जितना पढ़ाई करोगे उतना मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। द कोरिलेशन बिटवीन डूइंग स्टडीज, वॉल्यूम ऑफ स्टडीज एंड मार्क्स is not as strong as in school and college exams. मैंने आपको पहली बात बताई, because there are many other X factors involved to perform in the test, including presence of mind during the exam. Check scores in the assignments out of 300. एक score of 150 plus तो मैं minimum expect कर रहा हूँ। अरे भाई सिर्फ 75 questions दिए हैं, 14 दिन का समय दिया है, आप बुक्स भी रेफर करके क्वेश्चन को ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो, दो फ्रेंड्स डिस्कस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये भी अच्छा है। लेकिन समझ के करो, जो भी आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर मैं ए मार्क कर रहा हूं तो ये ए आंसर आया कैसे, ये मुझे समझना चाहिए। भले मेरे फ्रेंड से डिस्कस करके उसे हिंट लिया और फिर मुझे वो क्रैक करने को हुआ, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट, बट एटलीस्ट यू लर्न आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड राइट विद कन्विक्शन व्हाटएवर यू आर राइटिंग इन द असाइनमेंट, ये एक्सपेक्टेड है। और 150 प्लस मार्क्स असाइनमेंट में तो मिलना एक्सपेक्टेड है। और मुझे बता के थोड़ा सा दुख होता है कि कुछ बच्चे असाइनमेंट सबमिट ही नहीं कर रहे। There are some students, now we are going to identify such students and we are going to SMS parents about their names कि ये बच्चे हैं जो असाइनमेंट ही नहीं सबमिट करे। ऑलरेडी हमने एक एक्सरसाइज की है, 3 महीने पहले मैंने ये ऑलरेडी भेजा है, एक लिस्ट टू पेरेंट्स, एंड यू मस्ट हैव रिसीव्ड SMS of your child if the child has not been regular in assignments. But now we are going to do another review about it, and next week you will find another set of parents being called out, sorry, students being called out. So therefore यहाँ पे असाइनमेंट मिनिमम सबमिट करना ये तो एक्सपेक्टेड है। आप असाइनमेंट ही नहीं सबमिट करोगे, आप कुछ करोगे ही नहीं, तो ये सही बात नहीं है। Then supervise once in a while during test. देखिए मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, एंड ये हमारी सीख है, ये फरवरी का जेई मेंस के एग्जाम्स के थ्रू। सो आई वांट टू वेरी ट्रांसपेरेंटली शेयर विद यू, बिकॉज आई डोंट वांट दिस एपिसोड टू रिपीट विद GM-22 बैच। एक अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था GM-21 के बैच में। हाँ, मतलब जो साल भर हमारे साथ ऑनलाइन ही कोचिंग किए, 2 साल में थे ऑफ कोर्स, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल इन आवर टेस्ट। मतलब इवन अवर लाइव टेस्ट जो थे, हमारे जो एडू ऐप वाले टेस्ट थे उसमें भी, प्लस जो लाइव प्रॉक्टर टेस्ट थे उसमें भी अच्छा कर रहे थे। तो we thought that they were very good students. Good मतलब they were all 90 percentile plus kind of students. So we were expecting them to get 90 percentile plus in JEE mains. But ऐसे 30-40 बच्चे हैं जिनका अभी फरवरी का जब स्कोर आया तो we were shocked. कुछ को 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, किसी को तो 30-40 परसेंटाइल ही मिले हैं। तो इतने कम कैसे आए? तो वी वर ऑल्सो लिटिल पजल। देखो नर्वस हो गया बच्चा एग्जाम के समय, तो चलो 90 परसेंटाइल का बच्चा एक 65, 75, 80 परसेंटाइल तक तो आ जाना चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली 30 या 40 परसेंटाइल तो नहीं आता। देन वी इन्वेस्टिगेटेड, वी फाउंड आउट दैट दीज स्टूडेंट्स वर डूइंग सम माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द टेस्ट। तो बस अपने पेरेंट्स के सामने इमेज अच्छे रखने के लिए, इंस्टीट्यूट के सामने इमेज अच्छे रखने के लिए, और हायर बैचेस का सिलेक्शन होने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा इमेज रखने के लिए, दे वर इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द टेस्ट। मतलब कोई टेस्ट चालू है तो गूगल सर्च में जाएंगे यूजिंग अनदर डिवाइस, और वो गूगल सर्च में वो क्वेश्चन टाइप करेंगे, वहां पे कोई सोल्यूशन मिलता है क्या, वहां पे आंसर दिखेंगे। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तू फिजिक्स कर ले, तू मैथ्स कर ले, तू केमिस्ट्री कर ले, एंड दे शेयर द आंसर्स ABCD along with each other. या फिर दे आर डूइंग something else. There are so many innovative things nowadays which these kids can find out to game the system, and
they are basically doing it. That's why when we are conducting monthly test now, every Sunday के दिन ही होता है, पेरेंट्स घर पे होते हैं. So my suggestion है जो 3 घंटे अभी now we are doing live proctor test, मतलब पूरे दिन में वो कभी भी नहीं दे सकता है. हमने 3 घंटे आइडेंटिफाई किए, उसी समय टेस्ट देना है और उसका वीडियो भी ऑन रहेगा. उस समय एक बार आप खुद जाके देखो कि कोई किताब तो सामने नहीं रख रहा है ना, किसी फ्रेंड के साथ बात तो नहीं कर रहा है ना, या फिर उसके स्क्रीन पे वो कुछ कोई ऐसे साइट पे तो नहीं जाता है ना जहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप करते हैं. बिकॉज देयर आर सम साइट्स लाइक doubtsnut.com एंड ऑल दैट जहाँ पे यू कैन टाइप अ क्वेश्चन एंड दे गिव द सॉल्यूशन. एक स्टार्टअप है, ऐसे 2-3 साइट्स वैसे भी है. तो बच्चे ये सब यूज करके आंसर लाते हैं और आंसर वहां पे पंच करते हैं, मार्क्स मिलाते हैं. And they are cheating themselves. They don't understand this. जब एक्चुअल एग्जाम में ये होगा तो बुरी बात है. तो माय पॉइंट इज दैट ये हमने 30-40 बच्चों ने ये किया है, हमारा विश्वासघात GM-21 के बैच में. अभी हमने उनको सीख दी है, होपफुली आगे के एग्जाम में वो कुछ करेंगे. लेकिन देखिए अगर साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी और इसे चीटिंग करते गए तो फिर तो अभी उनका स्कोर भी इंप्रूव नहीं होगा. तो ये गलती GM-22 के किसी भी स्टूडेंट के साथ मैं नहीं चाहता हूं कि होनी चाहिए. और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कभी तो थोड़ा बहुत एक 5 मिनट 10 मिनट आते जाते सरप्राइज एक देख लीजिए कि बच्चा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना. बिकॉज फाइनली इफ योर चाइल्ड इज गेमिंग आवर सिस्टम, चलो हाँ आपने मार्क्स मिला लिए, आपने कोई हायर बैच ले लिया, बट ये कितना टाइम चलेगा? इफ द चाइल्ड डजंट डिजर्व दिस, then the child is going to be exposed on the day of the JEE examination, and then that is very bad. So ये purpose of everything that we are doing is so that the child becomes strong and the child's fundamentals are developed and does well in the examination. तो इसके विपरीत हो जाएगा अगर बच्चा dishonest रहे तो, and the child betrays our trust on the child and the child betrays your trust on the child. तो ये नहीं होना चाहिए. और हम आपके घर पे आके तो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते ना ऑनलाइन टेस्ट में, इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द टेस्ट डे एक 5 मिनट कभी तो बीच बीच में आके जरा देखा करो, उससे बच्चे पर भी एक चेक रहेगा. Have a friendly dialogue with your ward to gauge the interest and confidence levels. ये हमसे डेफिनेटली बताएंगे. बिकॉज ये सारा जो अनुभव बच्चे को आ रहा है, लेक्चर्स हो रहे हैं, डाउट्स हो रहे हैं, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, असाइनमेंट्स कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ये सब के बाद एक सर्टेन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे का पढ़ाई में और एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है. यदि आप महसूस करते हो कि ये नहीं हुआ है आपके बच्चे के साथ तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है. थोड़ा उससे और डीप डाइव करिए. मैंने ये जो भी आपको जो पॉइंट्स अभी तक बताए हैं पढ़ाई करने के मेथड्स के बारे में, वो टेस्ट असाइनमेंट के सॉल्यूशंस एनालाइज करता है कि नहीं, 41 इयर्स करता है कि नहीं, ये सब चीज से बात करने का आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है. और आपके लेवल पे भी आप थोड़ा बच्चे को काउंसिल करके गाइड कर सकते हो. और यदि लग रहा है कि इसे ये थोड़ा सिचुएशन और भी खराब है तो यू कैन आस्क फॉर अ काउंसलिंग अपॉइंटमेंट. विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड ऑन अ 1-to-1 बेसिस ऑन दैट आल्सो. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉलेज के बारे में. कॉलेज आज की तारीख में 21st सेंचुरी में कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है? 11th-12th स्टैंडर्ड का कॉलेज का सिस्टम आपके बच्चे के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या रोल है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का 2015 का रूलिंग बहुत क्लियर था कि एडमिशन टू एनी प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया, वेदर इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और व्हाटएवर, इज हैज टू बी बेस्ड ऑन एन एंट्रेंस एग्जाम, नॉट बेस्ड ऑन द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स मार्क्स. तो बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उसका रीजन भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो ये था कि भारत में 27 अलग अलग बोर्ड है, आप अलग अलग बोर्ड्स के 27 बोर्ड्स के मार्क्स को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंपेयर अ महाराष्ट्र बोर्ड 90% विद द CBSE बोर्ड ऑफ 86%, विद द बिहार बोर्ड ऑफ 84%. यू कैन नॉट कंपेयर देम, एंड देयरफॉर there is no way to normalize boards across the country, and therefore board exam should just serve as an eligibility criteria. और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड एग्जाम्स का 2019 तक क्या था? 75% बोर्ड एग्जाम में मिलाना है, राइट? 2020 पैंडेमिक ईयर था तो गवर्नमेंट ने उसको 35% कर लिया. फिर ये साल क्या है? 2021 भी गवर्नमेंट पैंडेमिक ईयर मान रहा है तो गवर्नमेंट ने 35% ही बोला है. और अभी न्यू AICTE के गाइडलाइंस आए हैं जो ये कहते हैं कि अगले साल से the eligibility criteria for all engineering colleges in the country, including the IITs, will be just 45% in PCM or any 3 subjects. अभी जो रिसेंट जो डिबेट चल रहा है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स की आवश्यकता ही नहीं है वगैरह, ये सब फुजूल की डिबेट है. मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट अंडरस्टूड व्हाट AICTE इज ट्राइंग टू टेल. तो बेसिकली AICTE इज डूइंग अ वेरी साउंड थिंग. वो क्या कह रहे हैं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से भले 45% नहीं मिलाए, हर्ज नहीं, लेकिन कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप 45% मिलाओ, आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई. आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली रहेगी. ये AICTE ने कहा है. तो आप ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स के बिना और केमिस्ट्री के बिना आप एक कर सकते हो. और ये तो ऑलरेडी केमिस्ट्री का तो रिलैक्सेशन है ही. अभी करंट रूल भी ये है कि 75%, जो 2019 तक रूल ये था कि 75% आपको फिजिक्स, मैथ्स और एक तीसरा कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मिलाना है. तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं था. तो देयरफॉर अभी केमिस्ट्री तो ऑलरेडी उन्होंने रिलैक्स कर दिया, अभी इस बार मैथ्स और फिजिक्स भी रिलैक्स कर दिया. So instead of these physics, chemistry, math, it could be computer science, it could be IT, it could be geography, it could be English. ये सब मिला के भी अगर 45% के ऊपर आपको मिल रहा है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये सब, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अगर आप पढ़ोगे तो यही बात आती है कि अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इज अंडरमाइंड, मतलब बोर्ड एग्जाम का महत्व घट रहा है एंड एंट्रेंस एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रोल ऑफ एंट्रेंस इज हैपनिंग। तो ये एक लेटेस्ट 21st सेंचुरी सिनेरियो है। तो मैं पेरेंट्स को दरखास्त करूंगा कि 1980s और 90s के कंसेप्ट लेके मत बैठिए, तब 12वीं इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अभी नहीं है। और कॉलेज के एग्जाम तो कहीं पे भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके तो रखा है इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने। कॉलेज एग्जाम्स का और बोर्ड एग्जाम का कोई महत्व ही नहीं है। गवर्नमेंट को कॉलेज एग्जाम पर कोई विश्वास ही नहीं है, अदरवाइज उन्होंने कॉन्टिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रखा होता, कॉलेज एग्जाम्स के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ होते थे। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज एग्जाम ऑप्शनल बोल दिया है। 70% junior colleges in Maharashtra don't even conduct unit tests, terminals and prelims. So the moral of the story is that college exams anyway carry zero weightage and have no equity in the child's career prospects. College must be bypassed therefore, and highest priority must be accorded to JEE studies. Only practicals must be attended in college. अभी तो ऑनलाइन के जमाने में तो वो भी नहीं होता है। सो अल्टीमेटली कॉलेज को बाईपास करना है। यदि आपने कोई कंपलसरी अटेंडेंस कॉलेज सिस्टम में ज्वाइन करने की गलती करी है ना, तो इसको चेंज करो। और अभी 11 से 12 जाने के वक्त एक टाइप कॉलेज में एडमिशन ले लो, बच्चे को सुखी रखो, उसको जेई पढ़ाई करने के लिए फोकस रखो, इसी से करियर माइलेज मिलेगा। फाइनली आपको जो एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में या प्योर साइंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो आपके जेई में कितने मार्क्स है या एंट्रेंस एग्जाम में रैंक कितना, यही पूछेगा। और 12वीं में मिनिमम 45% मिले ना, यू आर क्लियर। Nobody is going to ask you your unit test marks or your terminal marks or your pre-boards. All that is absolutely obsolete and irrelevant. So don't be anachronistic. Don't live in the 20th century and use those concepts and impose it on the child. Don't tell your child to do well in college exams. They have no value in the 21st century. We know the rules of the game currently. We have built careers year after year. We have placed students in the topmost institutions in the country and abroad. So I'm telling you with conviction that let the child focus on JEE studies and keep that as a first priority. हम 12वीं बोर्ड्स के लिए बच्चों को नोट्स देने वाले हैं और उनको हम 12वीं बोर्ड्स को पढ़ाई करने के लिए समय भी देने वाले हैं। और उस समय हम उनको ये भी काउंसलिंग करेंगे 12वीं बोर्ड्स के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, कि अभी सिर्फ 12वीं करो, अभी जेई मत करो। तो कब जेई करना, कब 12वीं करना, जिससे दोनों में सक्सेस मिले, ये हम जानते हैं। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों में सक्सेसफुल हुए हैं। And therefore, please follow this broad instructions that we have been giving to students, and that will definitely help the child. So what is the role of parents that we are soliciting in this entire process? Essentially, we are saying that you please take care of the child's diet, sleep, exercise and study regimen. ये एक monitor करना आवश्यक है. Do not advise your child on academic matters. ये आपने हमारे पास outsource किया है, तो let us do it. This is an academic surgery which we are doing for 2 years. So let us do it. So we know our job well. We know how to do this surgery. वहां पे आप बीच में मत बोलो। अभी हमने उन बच्चों को बोला कि ये किताब से पढ़ो, तो कोई दूसरा किताब आप मत बोलो। अभी ये एकेडमी, दिस इज अ वन स्टॉप ऑप्शन, वी आर गिविंग यू ऑल द ऑप्शन। फिर और एक कोई तो ट्यूशन या और एक कोई तो क्लास मत लगाओ बच्चे। सो बेसिकली माय पॉइंट इज दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ बोलते हैं ना, तो इससे ऐसा मत करिए। तो वी आर ऑलरेडी नोइंग व्हाट इज टू बी डन, वी आर गिविंग यू ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज टू बी डन। Let the child follow one path and achieve success. This is our advice, our request to you, not to advise the child on any academic matter. Do not compel your child ward to attend college or score well in college exams, as it is not relevant. If you notice that your ward seems confused, nervous or disillusioned for a prolonged period, अगर आपको लगता है कि महीना भर है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स, बच्चा ऐसा थोड़ा मायूसी है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, ज्यादा ओपन आउट नहीं हो रहा है, थोड़ा उसका इंटरेस्ट बहुत डाउन लग रहा है, देन डेफिनेटली जितना मैंने अभी आपको बताया है उससे आप पहले बच्चे को आप खुद काउंसलिंग करो। और अगर उससे भी सुधर नहीं रहा है तो आप definitely you seek a counseling appointment and we'll be happy to talk to your child and talk him out of this entire problem. So we basically are advocating a vigilant yet supportive role for a parent who stays updated with the latest scenario. तो आप ऐसे कुछ तो पुराने कंसेप्ट को लेके बच्चे को एडवाइस मत करना। ये बहुत सिचुएशन बदला है। हम मैंने 19 साल मैंने देखा है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर द रूल्स वर डिफरेंट। द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द रूल्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, and since we are professionals in this field, we are in touch with the latest rules, and therefore whatever we are advising is out of conviction and is for the long term benefit of the child. उसका और हमारे पीछे और कोई एजेंडा नहीं है। हमने भी 30 टाइप कॉलेजेस के साथ टाइप तो किया है, बच्चों को तो कर रहे हैं, हमने प्लेस किया है। तो ऐसा नहीं कि हमको उस कॉलेज सिस्टम का सम्मान नहीं है, लेकिन क्या है कि आज के तारीख में गवर्नमेंट ने मैंडेट क्या दिया है कॉलेज को, सिर्फ बोर्ड एग्जाम का तैयारी करो। और गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया है कि सारा करियर आपका एंट्रेंस एग्जाम पे डिपेंडेंट है। देखिए कितना फनी है। सो basically the government only has undermined the formal education system. Therefore, you have to bypass it, get coaching from a private coaching institute like ours, and study on your own as per the advice and get successful and go ahead.
दिस इज द स्मार्ट थिंग टू डू इन द 21st सेंचुरी फॉर एन इंडियन स्टूडेंट। नाउ जैसे मैंने आपको एग्जाम टेम्परामेंट की बात करी, तो एग्जाम टेम्परामेंट कैसे बिल्ड करे? नॉलेज तो वैसे हमारे लेक्चर अटेंड करके, हमारे इंस्टेंट फॉलो करके, पढ़ाई करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके तो बन रहेगा, लेकिन हाउ डू यू इंप्रूव द एग्जाम टेम्परामेंट, हाउ टू रिमेन सेंटर्ड ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जाम, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए हमने एक सोल्यूशन जो हम लोग हर लास्ट 19 साल से हमारे बच्चों को दे रहे हैं वो ये येस प्रोग्राम है। So we have strongly recommended that this is a unique self-development program. It's called Youth Empowerment Seminar. इसलिए yes बोलते हैं. It has amazing benefits like stress release, enhanced energy levels, more harmony in relationship with parents, with peers, with teachers, and therefore better focus in studies. So therefore the yes program में basically powerful breathing का meditation techniques पढ़ाए जाते हैं, and in a very fun way with a lot of games and processes, and it helps students to develop a calm mind and a focused mind, and this is very useful for the JEE studies also and during the exam also. तो हम लोग अप्रैल मई के पीरियड में ये येस प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर IIT के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि सभी इसका बेनिफिट ले। नॉमिनल फी होगी अराउंड 1000 रुपीज और सो फॉर दिस कोर्स, ऑप्शनल है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि ये प्रोग्राम पावरफुल है। बच्चे को ये टेक्निक अगर सीख लिया तो लाइफ भर ये टेक्निक कर सकता है। दिन में अगर 20-25 मिनट भी वो टेक्निक उसने रोज किया, slowly but surely the child's temperament will become calm and focused, and that is going to help the child's productivity no matter what the child does. पढ़ाई में, एग्जाम्स में, आगे चल के वो हायर एजुकेशन में जाएगा, प्रेजेंटेशंस करेगा, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज करेगा, प्लस आगे चल के कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, इनोवेटर बनेगा, जो भी करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, सभी में ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने मन पर कितना काबू रख पाते हो। तो these techniques help the students a lot. इस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया नाम की टेक्निक सिखाई जाती है और वो जिंदगी भर प्रैक्टिस कर सकता है। So over 2000 students in the past 19 years have been benefited from the YES program, और उनके अनुभव के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जरूर आप कर सकने का कंसिडरेशन करिए। So this will be definitely in giving you some information on this when the program will be held. It will be held online only, घर पे बैठ के करना है और वो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अप्रैल मई के पीरियड में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस समय आप ये कॉल ले सकते हैं। This is another recommendation from us. Now from information for parents to understand some figures. बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम तो जैसा नहीं है कि 90% मिलाओ, 95% मिलाओ। यहाँ पे कितने मार्क्स से क्या मिलता है? तो जेईई मेंस में 300 मार्क की परीक्षा है, अराउंड 75 to 90 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो 90 के ऊपर परसेंटाइल मिलता है। अच्छा, अभी परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू इन द कंपटीशन। सपोज एज्यूम करो कि 1000 बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं और आपका रैंक 100 आया, 100 रैंक आया, आपका 100 रैंक आया, मतलब आपके पीछे कितने लोग हैं? 900 लोग हैं, बिकॉज 1000 लोग थे, आपका रैंक 100 आया, तो 900 पीपल आर बिहाइंड यू इन द कंपटीशन। इसका मतलब है आपका परसेंटाइल कितना आएगा? 90, बिकॉज 90% बच्चे आपके पीछे हैं जो लोग परीक्षा के लिए बैठे थे। So 900 is 90% of 1000. So what percentage of people are behind you in the competition? This is what is basically indicated by percentile. So अगर 90 के ऊपर परसेंटाइल मिलना है आपको जेईई मेंस में, तो रफली 75 to 90 मार्क्स के बीच में का स्कोर लगता है। देखो ये बदलते रहता है, हर एक एग्जाम स्लॉट होती है परीक्षा में। जैसे ये साल 6 एग्जाम स्लॉट्स थे, हर एक स्लॉट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपको जो भी एग्जाम स्लॉट रहेगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आपके फ्रेंड दूसरा स्लॉट में लिख रहे हैं, उसको अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपके स्लॉट में पूरे देश भर में अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स अगर बैठ रहे हैं, तो उन 1 लाख स्टूडेंट्स में आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो हर एक स्लॉट में परसेंटाइल का जो कट ऑफ स्कोर है वो अलग अलग आ सकता है। तो रफली 75 to 90 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं आउट ऑफ 300, तो इट रफली ट्रांसलेट्स टू 90+ परसेंटाइल स्कोर। अगर आपको 225 to 250 के बीच में स्कोर मिलता है, तो इट रफली ट्रांसलेट्स इनटू अ 99.9+ परसेंटाइल स्कोर। दिस हैज बीन बेसिकली ऑब्जर्व्ड। अगर आपको 99th परसेंटाइल चाहिए, तो दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 180 to 210 मार्क्स। सो बेसिकली दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। सो अगर आपको 99 के ऊपर परसेंटाइल मिल रहे हैं, तो आपको सब इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। 90 परसेंटाइल प्लस मिलेंगे तो स्टेट लेवल के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, और आप जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो। जेईई एडवांस में क्या सिचुएशन है? वहां पे भी ऐसे ही है कि अगर आपको 20% to 35% के बीच मार्क्स मिलेंगे, तो आप कट ऑफ फॉर जेईई एडवांस क्लियर करते हो फॉर एआईआर। एआईआर मतलब ऑल इंडिया रैंक। मतलब आईआईटी क्या करता है, जेईई एडवांस की परीक्षा में 35,000 रैंक्स डिक्लेयर करता है। टोटल भारत में अराउंड 12-13 लाख बच्चे जेईई मेंस लिखते हैं, उनमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस में सिलेक्ट होते हैं। फिर जेईई एडवांस में जो 2.5 लाख बच्चे लिखते हैं, उनमें से 35,000 के आसपास रैंक आईआईटी डिक्लेयर करता है, और वो 35,000 के अंदर आने के लिए आपका स्कोर 20% to 35% के बीच में होना चाहिए। तो हर साल वो बदला है। अगर एक टफ पेपर आया तो कट ऑफ समटाइम्स हैज बीन एज लो एज 20%, और अगर इजी पेपर आया तो कट ऑफ हैज बीन एज हाई एज 35% ऑल्सो। तो वो बदलते रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। बट इतने मार्क्स मिलने से आपको रैंक मिल जाता है,
लेकिन अगर आईआईटी में सीट मिलनी है, एक सीट मिलनी है, तो एडमिशन मिलने के लिए आईआईटी में कितना रैंक लगता है? फॉर अ बॉय ओपन कैटेगरी 9000 के अंदर रैंक लगता है, एंड फॉर अ गर्ल बिकॉज देयर इज अ सेपरेट गर्ल्स कोटा ऑफ 16%, तो आपको एक 16000 के अंदर रैंक आना आवश्यक है इन कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर एन ओपन कैटेगरी गर्ल्स स्टूडेंट। हाँ, अगर आप ओबीसी एनसीएल हो, अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो, तो इससे भी कम रैंक होने के बावजूद भी आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सकती है। ऑलराइट, बिट्स पिलानी में a score of 250 plus out of 450 usually translates into a बिट्स पिलानी सीट फॉर प्योर साइंसेस। एमएससी ऑनर्स का एक उनका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए अराउंड 250 प्लस मार्क्स 450 मिलेंगे तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगी बिट्स पिलानी राजस्थान में, या बिट्स पिलानी गोवा में, या बिट्स पिलानी हैदराबाद में। और अगर आप 300 प्लस मार्क्स मिलाते हो बिट्स पिलानी में, तो आपको इंजीनियरिंग ब्रांच में मिल जाएगी बिट्स पिलानी। सीईटी में क्या सिचुएशन है? सीईटी में अगर 200 मार्क की पेपर होता है, तो 200 में से अगर आपको 150 प्लस मार्क्स मिलते हैं तो 99 परसेंटाइल के ऊपर यूजुअली मिल जाता है, एंड देन टॉप 3 पुणे या मुंबई के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस आपको एडमिशन मिल जाएगी। और अगर आपको 100 प्लस स्कोर आता है तो रफली 93 परसेंटाइल स्कोर आएगा, एंड अराउंड टॉप 10 कॉलेजेस मुंबई पुणे में आपको कोई ना कोई कोर ब्रांच इंजीनियरिंग की आराम से मिल जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द करंट फिगर्स आर। तो जैसे आप मंथली टेस्ट में भी आप देखोगे कि आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले एब्सोल्यूट लेवल पे, 30% ही मार्क्स मिले, 20% ही मिले, 40%, तो शॉक मत हो जाना, बिकॉज देखिए बेसिक आंकड़े ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के भी ऐसी इसी रेंज में रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई 90% या 95% मार्क्स मिलाते हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सो देयरफॉर see, the number game is different, the figures are different, therefore look at this whole process of the grad masters program, and ये सारे जो टेस्ट मार्क्स and this all these different parameters in a very matured way and in the light of these figures and statistics। इससे आपको बच्चे के साथ ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे और उसको अच्छी तरह से काउंसिल करके उसका हौसला बढ़ाते रह सकते हैं। देखिए हमारे लास्ट ईयर डिस्पाइट द पैंडेमिक, डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स, आवर स्टूडेंट्स क्रैक ऑल एग्जाम्स। जेईई एडवांस में हमारे 122 बच्चों ने रैंक लाया, तो we had around 600 students, almost a 22% success ratio। 47 students को just 15-20 दिन पढ़ाई करके सीईटी के लिए 99 परसेंटाइल मिला है। So once again we have proved कि जेईई पढ़ाई से सीईटी की पढ़ाई हो जाती है। सिर्फ सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज देना पड़ता है, जो भी हम बच्चों को देते हैं, तो सीईटी का टेस्ट सीरीज देते हैं, सीईटी के लिए अलग एग्जाम स्ट्रेटेजी लगती है, वो भी हम देते हैं, एंड इसलिए 47 स्टूडेंट्स। देखो आप कोई प्रॉपर सीईटी क्लास भी अगर आप देखोगे तो उनका हार्डली एक आधा बच्चा 99 परसेंटाइल के ऊपर होता है, और वो साल भर सीईटी करते रहते। हम लोग जेई करके लास्ट 15-20 दिन से सीटी करके भी 99 प्लस परसेंट की 47 स्टूडेंट्स थे। 154 स्टूडेंट्स को तो 95 परसेंटेज के ऊपर मार्क्स मिले। बिट्स पिलानी में 85 स्टूडेंट्स को बिट्स एलिजिबल स्कोर्स। हमने सारे 2020 के प्लेसमेंट्स, बच्चे फाइनली कहां गए, जो भी बच्चे हमारे टॉप नॉच ए प्लस ग्रेड कॉलेज में गए ना, तो उनको हमारा ऑलमोस्ट 250 बच्चों का हमने पूरा प्लेसमेंट हमारे वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन आवर इन द वेबसाइट IIT-PK.com। उसमें हमने पूरे 2020 के प्लेसमेंट्स किए, लास्ट ईयर के भी 2019 के 18 के भी हमने डाले हुए। तो आप देखो कि बच्चे कहां जा सकते हैं ये पूरे प्रोसेस को हमने फॉलो करने से। तो 12th बोर्ड्स ऑफ कोर्स हो जाता है। इवन अभी 2021 के रिजल्ट्स आए तो प्रियंका हैज बीन द गर्ल्स टॉपर। इनफैक्ट आई थिंक आई एम टोल्ड दैट शी इज अ महाराष्ट्र गर्ल्स टॉपर विद 99.9 परसेंटाइल, एंड अद्वैत वाज आवर बॉयज टॉपर। 356 students have got JEE advanced eligible marks. This is the highest success ratio in entire Western India. तो बाकी के लोग आपका सक्सेस रेशियो बोलते ही नहीं है, दे हैव हार्डली 25, 30, 40% सक्सेस रेशियो। वो सिर्फ टॉपर के नाम बोल के आपको खुश करेंगे। टॉपर्स तो एनीवे कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, अभी प्रियंका किसी और इंस्टीट्यूट में होती तो भी टॉपर होती, और हमारे इंस्टीट्यूट में तो भी टॉपर ही है, वेरी ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। तो वेरी ब्राइट बच्चे तो अपने मोमेंटम से रैंक लाते हैं, लेकिन ओवरऑल रैंक्स प्रोड्यूस करना, 356 बच्चों को वहां पहुंचाना, इसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का रोल है। हमारे एकेडमिक सिस्टम स्ट्रांग है, इसका ये प्रमाण है। इसलिए we always talk about success ratio. So we had an excellent success ratio of 62%. I think our success ratio is matched only by one more institute in Kota. वाइब्रेंट नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उनका भी सक्सेस रेशियो अराउंड 60% है। पर बाकी इंडिया में सारे जेई कोचिंग के सक्सेस रेशियोज आर वेरी पुअर, हार्डली 20%, 30%। पूना में एक इंस्टीट्यूट का 40% है, बट दैट्स इट। So these are all first attempters, long-term classroom program coached in Pune. I'm saying this because this is a good template and we want to beat this result in the subsequent March, April, May exams. And also for 2022 students, we expect that if we are able to deliver in a better program next year and our students study hard, then we can even beat this record which we have already got for this particular year. So this is just a target for students to, achieve on higher and higher side. Lastly, I would like to give all the communication channels and for what purpose you should communicate with whom.
First of all, as you may be aware that we have a batch coordinator system, which is also a unique thing कि हमारे हर एक lecture जो होता है वहाँ पे teacher तो पढ़ाते हैं, लेकिन there is one batch coordinator who sits and attends that entire lecture of students. And उस batch coordinator का phone number हमने हमारे WhatsApp group में डाला है. As parents, I hope you know it. In case you don't, then we'll again post it for you on the ERP site tomorrow. So for discussing the classroom behavior of your board, अभी of course ये online के sessions में besides the fact कि हम लोग हमारे कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, बीच बीच में वीडियो ऑन करने के लिए बच्चों को बोलते हैं, बिकॉज वीडियो ऑफ रहता है ऑनलाइन के जूम सेशन में, तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता, तो देयरफॉर हम वीडियो बीच में से ऑन करके पिन करते रहते हैं, और वो क्लास में डाउट्स पूछते हैं कि नहीं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि नहीं, कितने पार्टिसिपेटिव है, कितने एक्टिव है, इसका एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा. लेकिन जब ऑफलाइन सेशन शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप बच्चों के बारे में जान सकते हैं थ्रू द बैच कोऑर्डिनेटर. If you have some questions on the academic aspects, the tests, the assignments, or any other aspect, feel free to talk to the main academic administrator of the GM-22 program, Shalakha Madam. She has been with us for the last 15-16 years and is an experienced personnel and knows most aspects of the Grandmasters 2022 program. Besides Shalakha Madam, Harshada Madam, Seema Madam, and Brahmesh sir are three very experienced academic administrators who are also part of the Grandmasters 22 program, and you can get in touch with them in case you want to know something about any aspect of the academic program. In case you are not able to get this issue resolved from them, you can write an email at academics@iitpk.com, and especially if you want a counseling appointment for your child, this is the only mechanism. Write an email here and we'll definitely arrange for a counseling appointment with one of our academic counselors. Or if there is any other academic issue which is not getting resolved, which is troubling you or your child, then feel free to express yourself at academics@iitpk.com. If you have any fees related matters, issues or receipts related any transactional aspects, then you can write an email to accounts@iitpk.com. And in case the situation is not resolved by any of these mechanisms, you can escalate the matter to director@iitpk.com. And of course, you can get in touch with me directly at durgesh.mangeshkar@iitpk.com for any career related matter, about the entrance scenario, about any other aspect which you feel is important and which has not been resolved by any of the above mechanisms. So this is basically something from our side, and thank you very much for your presence and patient listening. I have given you a lot of information today in this presentation, which we usually do. And now I'm going to throw the session open for any questions that you may have. So feel free to ask these questions, and I'm going to request you to put the questions on the chat box so that I can answer them one by one. As I can see already a lot of questions which are put up, but I will take more questions in a short while. Yeah, just give me a moment. Let me go through the questions. Okay. Okay. Yeah, so basically last year by March end, somebody is asking, we have covered 40% of syllabus so far. So first 3 months we have spent in foundation, and thereafter we have basically started the JE level treatment from phase 2 onwards, right? So 40% is what we used to reach in offline classes also. In fact, in the online mode, we are able to go faster actually. So ऐसा नहीं कि lagging है. By and large, every year around 40% syllabus for M-Star, M and CSB cover होता है. For the masters achievers थोड़ा ज़्यादा होता है because they have started earlier also and their IIT level started right from day one because they were all done 8, 9, 10 IIT foundation. But 40% अभी हो गया. These are the foundational topics. तो foundation topics को cover करने के लिए समय लगता है. एंड इसके आगे सुपर स्ट्रक्चर है वो जल्दी हो जाता है. तो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर कंफर्टेबली वी आर एबल टू कवर द रिमेनिंग 60%. और हमारा जो सीक्वेंसिंग है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वो ऐसा है कि वॉट एवर चैप्टर वी आर टीचिंग नाउ will be building upon whatever chapters or concepts have been taught to them before. So our sequencing is very wonderful, and therefore the आगे के 60% syllabus जल्दी हो जाता है. तो from April to October तक वो आराम से हो जाता है. Every year around 40% ही होता है. So we are not lagging behind in any way. We are on track. हाँ, एक है कि अगस्त 16 की बैच जो है, जो अगस्त 16 को शुरू हुई थी, उनके लिए now we are from tomorrow onwards we are making our sessions not 3 hours per day, 4 hours per day. So that by June, July, we are able to catch up with the remaining batches. So that when we start offline sessions, we will be able to seamlessly merge them with the other batches. This is basically our plan. So August 16 के बैच को हम लोग एक थोड़ा accelerator mode में डालेंगे. तो instead of 3 hours per day, we'll be doing 4 hours per day for them from the next week onwards. This is one difference which is there.
Yeah, I think I already explained about the why we are putting the recordings not on the same day but on the Sunday. In case there are any clashes which you are finding of practical timings with your college practicals are clashing, and if it's a tie-up college, you can always talk to Medha madam. She's our college coordinator, and she'll make sure that the tie-up college conducts the practicals at another timing for our IIT-PK students, so that won't clash. If you are joined a non-tie-up college, then this might happen, but उसके लिए फिर हमारा एक अलग M Star Sync batch है जिसका टाइमिंग 3 to 6:30 है. So that again can be adjusted. So you please talk to Shalakha madam, or you write an email to at academics@iitpk.com. We'll find a solution for you. Yeah. All right. Um, okay. What other question is there? Yeah, so I agree that the interactive session is most effective, but I have observed most students are not engaging and don't ask questions, including my daughter, because she doesn't have the courage to ask questions. Okay. Well, all I can say is that the child must muster courage to ask the questions. उसमें कुछ nobody is going to ridicule the child or insult the child. All our teachers are very accommodative. They are very friendly people. So even if the question is not very wise, it's all right. I mean, everybody has asked stupid questions when they were learning. So our teachers do have that maturity and that accommodative nature. So let the child ask questions. That's somewhere the ice breaking has to happen. This is one. Secondly, what we can do is we can now from phase 3, this is going to start even more. Already it is being done by some teachers. But now we're going to call out names of students so that they speak up. This is also another mechanism which teachers are going to do from phase 3 onwards. So maybe that will break the ice and the children will be more encouraged to interact. So that is one thing which we can also do from our side. But somewhere the child also has to ask questions. Without that, we cannot ensure interaction. And that is the case even in the offline classes. It's not about online. Even the offline classes में अगर कोई बच्चा गुमसुम बैठा है, वो चुपचाप बैठा है, डाउट पूछता ही नहीं है, तो फिर that child का growth hamper होगा. ये तो ऑफलाइन क्लासेस में भी ट्रू है. It's not just with online. It's not about online only. So this is a universal issue, and therefore one step from the child's side and of course one step from our side will definitely do it. See, if the child misses the lecture due to school exams or any such college related issues, this can happen. But as I said, we are posting recordings, and we are also we know what topic was done. You can always ask a friend or call up the coordinator and ask what topic was covered, and read that relevant portion and try to cope up at least till the Sunday when the lecture is posted. So I think this is a part of the game, and this every student sometime one reason or the other, because not well or whatever, misses lectures sometimes during the 2 years time. So उतना तो initiative बच्चे ने लेना चाहिए. And my suggestion very clearly to you is, please seriously consider joining one of the non-compulsory attendance or tie-up colleges. I don't know with what idealistic or thought process, or with what thought process this particular decision to join a compulsory attendance college was taken. Last whole year has been whitewashed because of the pandemic, and I tell you, at least as far as formal education system is concerned, for it to come on its feet even this year is difficult. We are an agile private limited company. We are entrepreneurs, so we are able to do fast adjustments and able to find solutions. That's not the case with our archaic school and college system. So they are still many years and decades still behind us. So therefore, just follow our advice and don't create trouble for yourself. And there's no need of any particular solution. Just shift from 11 to 12th. There are many seats available. We can easily get you admitted to a 12th standard tie-up college, and all your problems will be solved, because there everything is flexible and it goes as per what we request them. So it's not that the college is going to force you on anything. And anyway, college में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है. By this लास्ट एक साल में उतना तो बात समझ में आ गई होगी आपको. तो एंड हम तो आपको नोट्स जो देंगे आगे, कंप्यूटर्स के भी नोट्स देंगे, आईटी के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के भी नोट्स देने वाले हैं 12वीं बोर्ड्स के लिए. यू डोंट नीड एनीथिंग. और अभी आपने देखा होगा ये साल गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट ने तो सब ये क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है 12 बोर्ड्स के लिए और 10 बोर्ड्स के लिए, बस उसी में से आएगा. बोले नहीं ऐसा क्या है, उसमें से आएगा और उसी में से आने वाला है. So therefore ये 2022 में भी कुछ अलग नहीं होने वाला. Yeah, see, Spark Batch concept is to incentivize top performing students. See, basically this is a calibrated strategy. We can't say that we will have no incentive mechanism. At the same time, we cannot discriminate students very grossly. And therefore, this is a balanced kind of a strategy we have, that every year, every month or every test के बाद हम batches shift नहीं करते. Every semester के बाद भी batches shift करते हैं.
एंड सेकेंडली स्पार्क बैच इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी वेल, उनको हम संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बुला रहे हैं, सो दैट दे गेट समथिंग extra because of whatever efforts they have put, whatever performance they have done. This is that. And see, ultimately you cannot escape discrimination. ये आप कितना भी डिनाई करेंगे तो ये कंपटीशन है, ये रैट रेस है, आगे लिमिटेड सीट्स ही है एंड लाखों बच्चे बैठने वाले हैं. तो you cannot stay in an illusion that there is no competition and this is a very euphoric or whatever, this is a very utopia है यहाँ पे, ऐसा नहीं है. So there is basically competition है. There are some harsh realities which the child will have to grapple sometime or the other. So there are many other harsh realities besides this also, which the child will have to grapple. So sooner the better. So there is soft discrimination which we'll have to introduce because that's the reality in the future. आगे जब बच्चा जाएगा कोई कॉलेज में, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहां पे भी कॉन्सेप्ट जितने रैंक मिला है उसके ऊपर आपको कोई ब्रांच मिलेगा नहीं मिलेगा, एक सर्टेन बैच मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब होने वाला है आगे. So we cannot protect the child's mind beyond a point from reality. This is reality and we have to finally accept it. But only thing is we are introducing the child to this reality in a graduated manner, in a very sophisticated manner. Okay. Child is not able to do phase 2 JEE mains concepts. How can he do JEE advanced concepts? No, there is no JEE advanced in phase 3 and JEE mains in phase 2. अभी भी हम JEE advanced ही पढ़ा रहे हैं. From phase 2, M-star and M batches have been introduced to JEE advanced concepts only. As far as career secure batches is concerned, वहां पे हम JEE mains ही पढ़ाने वाले हैं throughout. तो ये phase 2 में JEE mains हो रहा है, phase 3 में JEE advanced हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर M-star M batch में हो तो हम JEE advanced के ही concepts पढ़ा रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि उसको ये समझने में दिक्कत आ रही है, तो समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको ये जो भी स्टडी मेथोडोलॉजी बताई है पेंटागन की, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, 6 घंटा रोज पढ़ रहा है कि नहीं, टेस्ट असाइनमेंट सॉल्यूशंस कर रहा है कि नहीं, उसका स्लीप डाइट और ये सब कुछ मॉनिटर है कि नहीं. डाइट में भी अगर अब वो बच्चा अगर बहुत फ्राइड प्रोसेस्ड बहुत ही स्वीट फूड खाता है, बहुत रजस बढ़ाने वाला तमस बढ़ाने वाला फूड खाता है, सात्विक आहार नहीं लेता है, तो भी उसके पढ़ाई में उसका इफेक्ट आएगा. तो ये सब अगर वो कर रहा है और फिर भी अगर उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेक अ काउंसलिंग अपॉइंटमेंट. दिस इज ऑल आई कैन सजेस्ट. बट बच्चा अगर मेहनत कर रहा है ना, तो आई जनरली फाइंड दैट प्रोग्रेस होता है. कॉन्सेप्ट समझने में, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में दिक्कत आती होगी, समझ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है लेकिन आई एम नॉट एबल टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है. ये करंटली ये स्टेज है. उसके बाद आई एम एबल टू सॉल्व कॉन्सेप्ट्स आफ्टर 4-5 महीने के बाद आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आल्सो, बट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम. ये हो सकता है बिकॉज अंडर टाइम प्रेशर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगी. तो ये मैंने बताया आपको, ये जो 5 माइलस्टोन्स है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे एक सर्टेन टाइमलाइन में ये अचीव होंगे, और जैसे जैसे अचीव होंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इवेंचुअली विल बी एग्जाम रेडी एंड फ्यूचर रेडी. दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग. आप कंसर्न क्यों हो? व्हाई आर यू वरीड अबाउट 70% सब्जेक्ट्स कहां है भाई? पीसीएम हमने तो पढ़ा लिया है, बाकी तो इंग्लिश है जिसके लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक आता है जो कोई भी आपको कोई भी मिल जाएगा, हम भी देंगे आपको. एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश हो जाता है, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स ही बचते हैं आपके, तो बेसिकली 50% सिलेबस बाकी है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन बैंक आता है स्टैंडर्ड, वो ही पढ़ के जाएंगे तो हो जाता है, वो रट्टा मार के जाएंगे तो भी चल जाए. वो आईटी ज्योग्राफी होगा या जर्मन होगा या कंप्यूटर साइंस होगा. कंप्यूटर साइंस होगा तो 200 में से 100 मार्क तो प्रैक्टिकल से, वो जो कॉलेज के हाथ में है वो तो कॉलेज ही दे देता है. और आप तो जो पीजोग में हो तो वो तो हमारा टाइप कॉलेज है, वहां पे तो आपका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. और 45% इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड एज एलिजिबिलिटी फ्रॉम 2022. सो व्हाई आर यू वरीड? वो तो डेफिनेटली होगा. लास्ट 19 साल से बच्चे 1-1.5 महीना पढ़ाई करके तो मिला रहे हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स, कोई चिंता नहीं है. हाउ टू आइडेंटिफाई रिकमेंडेड बुक्स? हमने एक लिस्ट दिया है रिकमेंडेड बुक्स का. दिस वाज गिवन टू स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ फेज 2. आपका फेज 2 यदि सितंबर में शुरू हुआ या नवंबर में शुरू हुआ, डिपेंडिंग व्हेन यू जॉइन द प्रोग्राम, उस समय हमने एक लिस्ट ऑफ बुक्स दी है जो आपको मार्केट से खरीदने थे. हमने लिस्ट दिया है, आप बच्चे को पूछो, और अगर नहीं है तो आप शलाका मैडम को फोन करिए या मैसेज करिए, वो आपको वापस वो लिस्ट भेज देगी. व्हाट इज दिस स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट पर डे? मतलब दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, यही हमने कहा है. 3 सब्जेक्ट एक दिन नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बिकॉज गहराई की पढ़ाई है, डीप स्टडीज है, तो शुड स्टडी 1 सब्जेक्ट पर डे. एंड वीक में 3 दिन गिव टू द वीकेस्ट सब्जेक्ट. 3+2+2 सिस्टम मतलब 3 सब्जेक्ट्स है, पढ़ना है 7 डेज में, so therefore 3+2+2 सिस्टम से ही पढ़ना है. ये हम कह रहे हैं आपको. 3 days गिव टू द वीकेस्ट सब्जेक्ट. Okay. When should students do for college exams? Just go to the exam and give it. Nobody is going to fail you in 11th standard.
एंड बेसिकली हमने जो सिखाया है उसमें से काफी सारे चैप्टर्स कॉमन है कॉलेज के एग्जाम्स के चैप्टर्स के साथ। थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री में तो हमने जो अभी तक पढ़ाया है इज वेरी मच कॉमन विद द कॉलेज एग्जाम्स। मैक्सिमम अभी 1-2 घंटा आप एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं। कॉलेज में भी स्टैंडर्ड नोट्स देंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक दिया होगा, उसी में से आता है। टुडे नो कॉलेज कैन अफोर्ड a situation where they can ask difficult questions in the college exam and fail students because the responsibility will come on the college only कि आपने पढ़ाया नहीं इसलिए बच्चे फेल हो गए। तो 11th के मार्क्स तो कहीं काउंट होते ही नहीं है वैसे भी। तो व्हाट मैटर्स इज ओनली द 12th बोर्ड्स का मार्क्स, वो भी 45% ही चाहिए। सो देयरफॉर व्हाई आर यू वरीड? I don't think you should take tension of such silly things. We have a war to fight, and this is a war is JEE. Once the child cracks the JEE, the opportunities the child is going to get thereafter are terrific. ये सब चीज का कोई वैल्यू नहीं है आगे। कॉलेज में यूनिट टेस्ट में कितने मिले, फाइनल एग्जाम में कितने मिले, दिस इज नॉट गोइंग टू काउंट एनी impact due to new education policy? Yes, very positive impact for whatever ideology we are professing, whatever systems we have made, whatever we are telling you what to prioritize, uske liye all the vectors are aligned with respect to what we are telling you. So therefore in the new education policy there will be more flexibility for students even at higher education level and now. And basically we are expecting a single national entrance exam to be coming from 2022 because that's what the new education policy has said कि engineering के लिए अभी इतने 42 different entrance exams है, उसकी जगह पे एक ही एग्जाम रखी, ऐसा गवर्नमेंट को बोला है। तो that is hopefully likely to be implemented from 2022. So वो अगर होता है तो ये सब CET BET कैंसिल हो जाएगा, then only one exam will be there like JEE Mains and IIT के लिए JEE Advanced रहेगा, दो ही एग्जाम बचेंगे। So that is likely to happen if the new education policy is implemented from next year onwards. So that we have to wait and watch. The ICE book should be solved as soon as that chapter is taught by the teacher. ICE का questions and homework book questions, ये दो चीज as and when the chapter is completed by the teacher, वो chapter खत्म होने के बाद immediately उसी दिन ICE के वीडियो सॉल्यूशन देख लो ताकि आपको बेटर फील आ जाए उस चैप्टर का, एंड देन होमवर्क बुक के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना है, बाद में होमवर्क के सॉल्यूशन देखने हैं। दिस इज बेसिकली नथिंग इज टू लेट। आप as long as the child decides to be sincere even from today onwards, that child भले कोई माइलस्टोन्स के पीछे है, मैंने आपको बताया कि 2 माइलस्टोन्स क्लियर हो जाने चाहिए, 3rd माइलस्टोन अभी जून तक हो जाना चाहिए। अगर बच्चा एक ही माइलस्टोन क्लियर कर पा रहा है, दूसरा माइलस्टोन स्ट्रगल कर रहा है, कोई हर्ज नहीं है। अगर अभी तक फर्स्ट माइलस्टोन भी नहीं क्लियर किया तो वो बच्चा सिंसियरिटी नहीं होने की वजह से हुआ होगा। हैव अ टॉक विद द चाइल्ड, tell the child to be sincere, and I'm sure the child is going to be getting adjusted and will clear those milestones in the next 3 to 4 months, all the 3 milestones possible है। sincerity is the basic thing। ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ये ऑनलाइन है इसलिए ऐसा होता है, वो ऑफलाइन है इसलिए ऐसा होता है, उस टीचर को ऐसा ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ, ये सब नॉनसेंस है। अभी ये 1 लाख जो स्टूडेंट्स इंडिया में जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया फरवरी के जेईई मेंस में, some of them were some such hopeless coaching institutions where there was nothing happened properly, still they managed to do it because of their dedication and sincerity. And there were students with fantastic coaching systems, but because they were insincere they did miserably. So it's not about online or offline, it's about sincerity and insincerity, and that is intrinsic to the child। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। और पेरेंट्स का भी कैसे हो रहा है आपका, जब बच्चा क्लास में जाता था तो आपको पता नहीं चलता था कि बच्चा कैसे क्लास में व्यवहार कर रहा है, वो सिंसियर है या नहीं, नोट लिखता है कि नहीं, ध्यान देता है कि नहीं, क्या टाइम पास कर रहा है कि ध्यान दे रहा है, पता नहीं चल रहा था। अभी आपके सामने वो मस्ती कर रहा है ना, तो वो ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, इसलिए ऑनलाइन बदनाम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के कुछ डिफेक्ट्स डेफिनेटली है, लेकिन वो ऑफलाइन के भी तो है। ऑफलाइन के टीचिंग में आपको फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, आपको वही लेक्चर बार बार सुनने का मौका नहीं मिलता है जो ऑनलाइन में मिलता है, बहुत बड़ी डिफरेंस है। सो देयरफॉर देयर आर सम, I personally feel that ultimately for a sincere student both are equivalent, and that has been shown by the top 1 lakh students in the country. So therefore इस चीज को आप समझ लीजिए और finally tell the child to be sincere, everything will fall in place. There was a news in the newspaper that 12th marks will have equal weightage. Mr. Ajit Pawar doesn't know the Supreme Court 2015 judgment. He needs to be educated on that, and those bureaucrats to whom that committee is going to be formed, they're going to do that. By month end, they are going to submit a report, and probably they doesn't know about the Supreme 2015 ruling. That's why, and they are going to put the same thing across, that 12th marks cannot be given weightage because this is the Supreme Court 2015. Now, these state governments have no locus standi to go against the Supreme Court ruling. So therefore, even the central government cannot do that. And therefore, ये तो अभी
इट्स अ दगडावरची रेग म्हणतात ना तसं झालंय. सो therefore 12 boards will never have. And the Supreme Court was very categorical. It said if you want to give importance to 12 boards marks, you should have one nation, one exam, one board. पूरे देश में अगर एक ही बोर्ड है तो आप बोर्ड एग्जाम्स, एक ही बोर्ड पेपर पूरे देश के लिए होगा, तब आप बोर्ड एग्जाम का आपको वेटेज दे सकते हैं, तब तक नहीं दे सकते. बिकॉज आज अगर सीबीएसई का स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट का मार्क्स सामने आ गया, आप किसको देंगे, प्रेफरेंस देंगे? Will you give say that CBSE is more difficult than state board, so CBSE में कम मार्क्स मिलेंगे तो भी उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. There is no way to normalize marks across different boards, and there are 27 different boards in the country. Therefore, Supreme Court said get lost with this 12 board stuff and just basically focus on the entrance exam, and entrance exam के basis पे admission देना शुरू कर दो. ये clear judgment है. So therefore, this is the basic reason why our politicians keep talking all these things. ये first time नहीं है. ये लास्ट 4-5 सालों में बहुत सारे politicians ने ऐसी बकवास की है at different forum, and they have all been rejected, and again things have come back to square one, because then when they are told the Supreme Court judgment, they keep quiet. For undergraduate admissions from 2022, Maharashtra government is planning to have nahi, wo to nahi hai, hone wala nahi. I already spoken this. 45% even for IIT. Yes, across the board, everybody associated and affiliated to the AICTE, which is the governing body for all the 3,300 engineering colleges. 45% for any 3 subjects is going to be the eligibility criteria for 12th standard boards. I already had a word with Sastra sir 2 days ago, and he is very clear that we are not backing down at all, and this is going to be something which is going to be imposed, and because it is also in sync with the new education policy. That's why this is definitely going to happen. And you know that the central government, once it decides to do something, then let the world go from this side to that side, it's going to do it. And ye hone wala. Why the schools, boards, government are imposing minimum percentage attendance if the mandate from court is very clear? God knows. Ask the college. And why are you listening to the college? This is another funny thing for me. You have to challenge the college कि आप अपना इंपॉर्टेंस भले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बनाने रखने के लिए आप ये कर रहे हो क्या? कोई कर इंपॉर्टेंट. और अगर कॉलेज को अपना रेलेवेंस रखना है, देन टीच फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, teach for something which is going to give career mileage to the child, teach problem solving ability to the child, teach conceptually fundamental stuff. वो नहीं करेंगे, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो टीचर्स ही नहीं है. So it's all hypocrisy. So that's why you have to bypass it, and that's why you should do what we are telling you to do. Yeah, my question, thank you for the informative session. My question to you is, when questioned about solving 41 years, my child finds questions to be a little tricky or difficult. Well, देखिए, जेई पढ़ाई तो difficult है ही, तो somewhere the child has to break the block, break the ice, has to keep trying. अब मैं जब IIT का पढ़ाई किया था तब मुझे 2-2 महीने एक ही चैप्टर पर लगे थे, ऐसा हुआ था सम टाइम में. पर एक बार वो जो एक बैरियर क्रॉस हो जाता है ना, देन वो एक गति आ जाती है, फिर यू स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट एंड देन थिंग्स स्टार्ट मूविंग. सो डेफिनेटली ये कोई इजी चीज नहीं है, ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीजें नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज का एजुकेशन नहीं है, ये जेई स्टडीज है. दिस इज द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 230 नेशंस. सो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा समय लगेगा, तो बच्चे को आप इतना ही कहो कि आप कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, और अगर सॉल्व में नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से सीखो, और सोल्यूशन से ये भी सीखो कि सोल्यूशन क्या है, ये सीखना है, लेकिन दूसरा चीज मैं क्यों नहीं सोच पाया, और ये सोल्यूशन में उन्होंने ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का पिकअप किया जिससे क्रैक कर पाए, ये भी सोचो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यदि ये बच्चा ये कर पाता है तो धीरे धीरे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय गोइंग थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, द चाइल्ड आल्सो डेवलप्स द एबिलिटी टू क्रैक क्वेश्चंस हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ. तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी. मैंने कहा ना कि थोड़ी ना मैंने कहा कि 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन बच्चा कर पाएगा, नहीं. 10 में से 5 क्वेश्चन अगर बच्चा सिंसियरली कर पाएगा बाय जून जुलाई, तो अभी बाय 2-3 क्वेश्चन ही कर पाएगा आईटी क्वेश्चन, दैट इज स्वाभाविक है. नहीं कर पाता है इसका मतलब वी शुड नॉट लूज होप. You should keep trying. Then only the problem solving ability is going to develop. It's like a mountaineering है ये कोई फ्लैट ग्राउंड में चलना नहीं है. ये थोड़ा सा बच्चा चलेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा सा हर्ट होगा, ये चलेगा टाइम. So the child has to do it. No, KVPY lectures were conducted. Probably your child was not aware. And for this M-Star, M and CSP batches, we are for the 12th standard, the KVPY sessions are going to come, because you guys are not prepared for the 11th standard KVPY. Na? 11th standard ka KVPY masters, achievers and some selected students from M-Star were picked up, and they were given extra sessions by us in 11th standard. For 12, but for the rest of them, you are supposed to write KVPY in 12th standard. तो आपके लिए हम लोग proper KVPY के sessions additional arrange करने वाले हैं. For physical chemistry, no. You please check up the CSB ka aapka group. We have posted all the latest chapters of physical chemistry notes also on the Google Classroom. So have a look at it.
need a guide for 4-5 students who will guide weekly and keep a watch. No, that's not possible. This is a self-study program. This is a coaching program. This is not a private tuition. This is a coaching program and we are going to have systems and we are going to have protocols and you have to follow it. ये कोई हर एक स्टूडेंट पर कोई हम वॉच रखेंगे, उनको 4-5 स्टूडेंट के पीछे लगेंगे, ये प्राइवेट ट्यूशन नहीं है. Yeah, what's the question? More DDS sessions should be conducted. Yeah, fine. So 1 week before that DDS, but otherwise also you can have questions, doubts can be asked during the lecture, doubts can be asked by posting doubts on the doubts forum and during the DDS sessions. ये 3 से हो जाता है. For a student who is basically focused, ये हो जाता है. Otherwise नहीं होगा. Yeah, DAV के स्कूल का क्या इश्यू है आपका? Okay, somebody is having a problem specifically about a particular college. You can please talk to the academic administrator. You can write an email to me, and then I will respond to you because it's a specific question regarding one particular school or one particular student. So basically, for the offline sessions and for the online sessions, our timings are different. हमने जो आपको बताया था admission के समय, these are offline session timings, and we are going to stick to that. When offline sessions start, we will be having the sessions as per what was mentioned in the stuff. But in the online domain, it's very easy for you to game the college system. And we have already told you not to attend a compulsory attendance college. This is very categorical recommendation. So there is no reason why you should violate this particular recommendation. And if you do so, it should be at your own risk. And for that also, we have given a solution. We have created an M-Star Sync batch, which is at 3 to 6:30, which doesn't clash with any of the other college timings, which are compulsory attendance. You can join that and get the benefit out of it. So therefore, there are no conflicts for if you join an M-Star Sync batch. We are allowed students such where there are clashes like that. And I'll again reiterate that 11 to 12 में जाते वक्त आप consider changing the college so that will be very easy for you to navigate this entire 1-year course. Otherwise, students' performance will get affected. Unnecessary stress the child will suffer. We don't want that to happen, right? Let the child enjoy the studies and yet grow in the knowledge. This is what we want the child to have. That's why a complementary college is good to support this particular program. I think how should revision be done and all that, those things we keep advising students. Backlog clear करने के मैंने Sundays बोला है. Then there are 5 months from November to May when we are going to be revision. So there will be an appropriate time where all these things will be done. So that has already been told. No, not at all. 60% syllabus is getting, every year हमारा ऐसे ही होता है. Very comfortably it gets covered because the sequencing is done very nicely. And because we build up on the previous concepts, तो आगे के chapters बहुत short है और fast हो जाते हैं. So therefore it doesn't take, जैसे आपने building में देखा तो foundation build करने को बहुत समय लगता है. लेकिन एक बार वो फाउंडेशन बन गया, फर्स्ट प्लेंथ आ गया, फिर उसके आगे के सुपर स्ट्रक्चर गेट्स डेवलप्ड प्रीटी फास्ट. इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. देयरफॉर आगे के लिए उतना समय नहीं लगेगा. या केवीपीवाई के लिए वी आर गोइंग टू गिव यू कंप्लीट गाइडेंस बिकॉज़ एनीवे जेईई एडवांस लेक्चर्स हम जो दे रहे हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर केवीपीवाई. और केवीपीवाई में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, उसके लिए एक्स्ट्रा सेशंस भी हम लोग केवीपीवाई एग्जाम के 2 महीने पहले आपको देने वाले हैं, व्हिच यू कैन अटेंड. ओके, सो डोंट वरी अबाउट केवीपीवाई. हम आपको सॉल्व पेपर्स का बुक भी देते हैं केवीपीवाई के लिए. So all those things we will provide, but for this M-Star M and CSB students, KVPY 12th standard में देना होता है, इसलिए आपके ये सेशंस 12th standard में आएंगे, अभी नहीं आएंगे. Doubts forum is unidirectional. Of course, only when students will ask doubts, then only the teachers can respond, right? So it's like that only. So unless the doubts are coming from the child side, we cannot incite any doubts from faculty side. So once the doubt is posted, the teachers are supposed to answer within 24 hours. On one occasion, we did find a particular teacher not responding fast enough. So we have asked the teacher to correct themselves. So वो किया है, वो feedback दिया है. But it's a one-off situation. It's not going to be happening all the time. See, getting score between around 54 marks out of 300 मिल रहा है, तो is counseling required? This may not be an appropriate question. If the child is consistently getting less than 35 percentile, because percentile is what is going to decide whether, because a particular exam may be difficult, so for that 54 marks may be a good score, but an easy exam के लिए 54 marks may be a bad score. So absolute score से नहीं हम comment कर सकते, but if the child's relative performance is always less than 35 percentile, then counseling is necessary. Otherwise it is not necessary. But anyway, today आज मैं आपको इतना जो information दिया हूँ, मेरी request आपसे इतनी है कि आप कभी भी अगले 2-3 दिन में शांति से एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ करिए 1 घंटे भर के लिए. और ये जो भी मैंने पॉइंटर्स आपको बताए, ये बच्चा फॉलो कर रहा है क्या, ये घर पे कर रहा है क्या,
क्वालिटी ऑफ स्टडीज एंड क्वांटिटी ऑफ स्टडीज, कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस द चाइल्ड इज फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग, ये थोड़ा समझ के लो। और उसके बाद आपको उसको आइडिया आएगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसका एंथुजियाज्म लेवल कितना है, उसका उसका क्या चल रहा है बेसिकली, इसका आपको एक अच्छा फील आएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू देन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स व्हाटएवर इज देयर। My 11 didn't go well. Can I crack JEE Advanced with a good rank? See, as long as you have continued the program for 1 year, and even if you decide to start today onwards and sincerely put in efforts, it is possible for a sincere child in the next 1 year also to do well in JEE Mains and JEE Advanced. It is possible. But sincerity चाहिए, और अभी इसके आगे हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो बच्चा फॉलो नहीं करेगा हमारी बात, then nothing will happen. Then we cannot be very sure about it. Yeah, JEE Advanced syllabus will get over by October. उसके बाद November, December, January will be revision and test series, and उसके बाद again JEE Mains will be there. After that again further sessions phase 5 में रहेंगे after 12 boards is over. That is going to be there, and every year हम लोग इसको आराम से complete कर पाते हैं. Assignments are not informed through WhatsApp. Why is it required to be informed through WhatsApp? You get an email once the assignment is posted on Google Classroom, and it is your duty to refer to the Google Classroom on a daily basis. Check it out and do it. आपको कोई स्पून फीड करेगा, आपको हर एक चीज बताएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? Sorry, when you go to an institution like IIT or engineering college, the professors don't even look at you. Forget about anything else. Don't even teach anything properly. Everything खुद करना है, और that is going to be just 1 year from now. Within a year's time also, you're going to be in an engineering college, and it's an extremely hostile atmosphere there. No matter which engineering college you work there. Don't think that teachers are going to teach you and going to clear doubts for you and going to counsel you and all that. Sorry, counseling word doesn't exist in engineering domain. They are in the 4 years. सब कुछ खुद करना होता है. So get ready. Don't expect things on a platter. Search for stuff yourself. Google Classroom दिया है आपको. You are a Google Class. आपको email आता है the moment it is posted. Check your email. If you don't check your email, you don't check anything, it's not going to happen. There are some students who don't even check WhatsApp groups. This is not done. So ये सब थोड़ा proactive रहना जरूरी है for students, और अगर आप ये करोगे तो ही you will be in tune with this program and thereafter in higher education. Otherwise be thrown out of the system. You don't understand it. तो ये ऐसा नहीं करना है, and don't expect unreasonable things from people. See, if there won't be any offline classes this year, ऐसा अगर situation आता है, ऐसा आपका question है, somebody is asking a question, if there are no offline classes at all, no offline classes happen at all for the entire year, is there any backup plan to compensate for offline learning? See, as I said, there are two negatives as far as online coaching is concerned. One is that peer-to-peer learning doesn't happen. मतलब फ्रेंड्स नहीं इजीली बनते, तो फिर वो थोड़ा फ्रेंड्स का जो कमैरेडरशिप है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, विच इज अ प्रेशियस लॉस, आई अंडरस्टैंड. पर अगर ऑफलाइन नहीं हो सकता है तो इतना ही मैं कहूंगा कि जैसे बच्चों के पास अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो माय सजेशन टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज कि आपको तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चों के फोन नंबर्स दिख ही जाते हैं, तो क्यों ना आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें, कॉल करें, और आपका खुद का एक 4-5 बच्चों का एक स्टडी ग्रुप बनाएं, ताकि आप एक दूसरे को एवरी वीक, कभी आप एक बच्चा दूसरे बच्चे के घर पे जा रहा है, somebody hosts the rest of the students, every Sunday को मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, थोड़े जोक्स करते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और थोड़ा एक दूसरे को मदद भी करते हैं. तू फिजिक्स में स्ट्रांग है, मैं केमिस्ट्री में वीक हूं, तो मैं आप दूसरे को मदद कर रहे हैं. तो बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स यूजुअली न्यूट्रलाइजेस ईच अदर्स वीकनेसेस एंड ग्लोरीफाइज ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स. दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. So developing a good study group is a very useful thing, both emotionally also and intellectually also. So therefore, ये अगर आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके थोड़ा मेल जोल बढ़ा के कर सको, तो कहीं ना कहीं ये जो पीयर टू पीयर लर्निंग वैसे ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा कम हो पा रहा है ना, उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा. दिस इज नंबर 1. सेकेंड इज देयर इज नो आई टू आई कॉन्टैक्ट. बॉडी लैंग्वेज रीड करके टीचर नहीं पढ़ा पा रहा, ये एक डाउन साइड है ऑनलाइन कोचिंग का. तो अगर ऑफलाइन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है, राइट? बट रिकॉर्डिंग्स तो दे ही रहे हैं हम लोग, और बाद में तो रिवीजन के लिए तो हम लोग पूरे सिलेबस के रिकॉर्डिंग्स देने वाले हैं बच्चों को. वी हैव अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स विच आर वेरी गुड. तो जस्ट अ टाइप ऑफ अ बटन, एक कंसेप्ट का टाइप किया कीवर्ड, तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक शॉर्ट राइटअप एंड सम वीडियो ट्यूटोरियल्स बच्चे को आ जाएंगे, तो इट विल बी वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव रिवीजन भी बच्चे का हो सकता है. And that is typically given after the syllabus is over.
See, the percentile which is calculated, which we give to you, is out of the number of students in your stream who have written the test. Suppose, for example, M batch kit stream में there are, let's say, 200 students or 250 students. तो ये सारे 250 students में आपके बच्चे का रैंक क्या है, परसेंटाइल क्या है, ये दिया जाता है. So it's like that only, depending on whichever stream you do. Okay. See, the reason why we don't ask students to put on the camera is because वो bandwidth optimization फिर नहीं हो पाता. सभी लोग वीडियो ऑन करते रखते हैं तो फिर काफी बार वो नेटवर्क कैरी नहीं कर पाता है, फिर वो वॉइस मेटालिक हो जाता है टीचर का, एंड देन समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू हियर द वॉइस. ये सब इश्यूज जूम में आते हैं, ऐसा देखा गया है. इसीलिए हम लोगों ने वीडियो ऑफ करने का रिक्वेस्ट किया है, लेकिन बीच बीच में हम बच्चों को वीडियो ऑन करने को बोलते हैं. कभी कभी टीचर बच्चे का नाम कॉल आउट करता है तो उसका वीडियो ऑन करने को बोलते हैं, ये करते हैं. हाँ, आफ्टरनून बैच का टाइमिंग एम स्टार सिंह का तो 4 o'clock से ही करने वाले हैं आप, डोंट वरी, फ्रॉम फेज 3 ऑनवर्ड्स. तो आपको टेंशन नहीं रहेगा एम स्टार सिंह बैच. तो आपका अगर कोई क्लैश हो रहा है 2:30 to 4 में तो हो जाएगा, डोंट वरी. No, teachers are not going to change in any batch from phase 2 to phase 3. Phase 2 to phase 3 teachers same रहेंगे, and unless there is some feedback issue of any teacher. So, but we'll change some streams of students depending on their performance. Till now, we might change some students' streams depending on their performance. And the streams are changed so as to give more comfort of learning to the student. It's not for any other purpose. So teachers are not going to change from phase 2 to phase 3. हाँ, phase 3 खत्म होने के बाद, अक्टूबर के बाद phase 4 तक जब जाएंगे तब teachers बदल सकते हैं. Then different teachers will come for phase 4. That is there. But phase 3 के end तक usually we like to maintain the same teachers. How can the students who are out of station receive the books to be given in April? You will have to send somebody to collect the books. Whomsoever you authorize, we will give the books to them. Or you can even ask a courier person to pick up the books from our office. We'll give the books to them as long as you advise us on the details of the person. So that is definitely possible. And anyway, PDFs are usually provided on Google Classroom anyways, which you can take printouts anytime at your end. सी, ये कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं, ये बच्चे नहीं अटेंड करना चाहते, पेरेंट्स को ही लगता है कि कॉलेज अटेंड करना चाहिए. ये एक आप आइडियलिस्टिक 1980s 90s का व्यू रख रहे हो, ये प्रॉब्लम आपका है, बच्चों का नहीं. बच्चों पर ब्लेम मत करना. बच्चे ये सेशंस लेके खुद का पढ़ाई करने में उनका इतना समय जाता है कि दे डोंट हैव मच टाइम फॉर कॉलेज और एनी अदर स्टफ लाइक दैट. एनीवे कॉलेज में जैसे कुछ मीनिंगफुल पढ़ाया नहीं जा रहा और एनी वैल्यू एडिशन हो रहा है, ऐसे मुझे नहीं लगता. एट मोस्ट कुछ बेसिक चीजों का रिविजन होता होगा. But that's a waste of time right now. Right now there's such a huge syllabus to cover. Better they invest time on these studies. That's what's going to make a big difference. Yeah, you will receive. In case you have requested for counseling, we'll definitely revert back to you. In case it has been missed, you can just send a reminder email again, and definitely counseling appointment will be arranged. Already there are almost 5 to 6 counseling appointments being arranged by us every 2-3 days. So in case we have missed your email, please just send a reminder. We'll immediately get back to you. Don't worry. Okay. Updates on One Nation, One Entrance. New education policy government has said they will implement from 2021-22 year. So we are hoping that by 2022, the One Nation, One Exam policy will be implemented. So we are hoping that. But you know, because of these different issues of pandemic which come about, the government is sometimes unable to make proper decisions, or they take time to make decisions. We cannot really help. Is it compulsory to complete the tie-up college assignments? Tie-up college में आप कुछ भी मत करना, सिर्फ कॉलेज में आप हो, अपने फीस भरी है, बाकी का सब एवरीथिंग विल बी मैनेज. नो स्टूडेंट विल बी फेल्ड इन 11th स्टैंडर्ड, एंड 12th में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं कॉलेज के, जो 20 मार्क्स % जो भी है वो आपको मिल जाएंगे. टाइप कॉलेज का आपको टेंशन लो ही मत. आप बाकी कोई कॉलेज में हो तो फिर आप ये सब चीज विचार कर सकते हो, बट टाइप कॉलेज एवरीथिंग इज मैनेज्ड. Okay. What is the highest rank? I think you must be knowing Sankalp Gaur stood All India rank 1 in 13 lakh students in 2015, right? And as far as this year's JEE Mains is concerned, the rank will be declared in June 2021. So that time we'll let you know the rank, which is the best rank which was available. Yeah.
And for all other results of the previous years, we already put it on our website. You can have a look at it. So syllabus of JEE going to reduce? No. Syllabus of JEE is not going to reduce. अभी ये पैंडेमिक ईयर था, 30% सिलेबस रिडक्शन सीबीएसई ने किया, स्टेट बोर्ड ने किया, जेई ने, नीट ने एक कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, सिलेबस वैसे क्या वैसे ही रखा. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, the government knows very well that students are very smart enough and they will focus on coaching institutions and they will study on their own. Nobody is dependent on the formal education system of India. It's a pathetic formal education system. And if your eyes have not opened by looking at the debacle and the way that it has been handled in the last 1 year, then I think I really don't know what to say. So it is that this pandemic has exposed the fragile state of affairs about the education sector in our country. And therefore, if we are able to deliver online coaching and we are doing it passionately, you must take it and go ahead. Forget about it. JEE कुछ reduce नहीं होगा ना. In fact, during the pandemic year of 2020, the JEE advanced paper जो सितंबर का आया है, it was the toughest JEE advanced paper in the last 15 years. मेरा comment भी आया है Times of India में और सभी papers में. It was the toughest paper. So JEE IITs ने तो ruthlessly, even in the pandemic, the toughest paper since 2006 set किया था ये सब. So don't expect any mercy from NTA or from IITs. Oh, pandemic है, ये है, वो है, हम easy करेंगे. कुछ easy busy नहीं करेंगे. They will keep it as tough as anything else. So therefore, you have to work. You should understand there is ruthless competition in the country. You have to work hard. That's it. And you have got all the facilities. Our children are so lucky. Sitting at home, they are getting this education. They are getting the best resources. They are having the best platforms. They are getting it from very good teachers. We are supportive. We are ready to listen. We are ready to give you all the help. So they should take it and move ahead. यहाँ पे not make a fuss and tantrums about things which are यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया उधर हो गया, वो तो होगा ही. बट जो अच्छा है वो देखो और आगे जाओ. और डिफिकल्टी सबको हो रही है, घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन बहुत बच्चों को आ रहा है. ये तो सब जगह हो रहा है, यूनिवर्सल फिनोमिना, ग्लोबल फिनोमिना है. बट इससे क्या, फाइनली आपको मार्क्स तुम्हें मिलाना ही पड़ेंगे, परसेंटाइल मिलाना ही पड़ेगा, तो ही आपको आगे है. ये नहीं बोलेंगे कि पैंडेमिक था तो मैं फ्रस्ट्रेट हुआ इसलिए आई विल गेट सम एक्स्ट्रा कंसेशन. नो, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है. So no syllabus reduction, no level of difficulty rationalization, nothing. Things are going to be as usual, business as usual. तो ये समझ के we should also study as usual. That's why we have kept the same deadlines, right? हमने हमारे प्रोग्राम में कोई डाइल्यूशन किया ही नहीं है. हाँ, हमने ऑफलाइन प्रोग्राम प्लान किया था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन करना पड़ा. लेकिन all our deadlines we have met. वैसे जैसे हमने कहा था वैसे ही प्रोग्राम हो रहा है. There has been no change. Because the exams are also like that only. They are not going to change at all. Yeah, phase 3 same teachers. Yeah, I know there are some downsides of the online stuff, but you have to live with it. We don't have a better option, right? Sometimes the least imperfect option should be accepted. ऐसे ही है, most time in life that's what we have to do, right? So we have to accept the least imperfect option. The least imperfect option today is the online coaching option, because we cannot risk safety, not safety of the student, not safety of our staff, not safety of family members of all of us. So we cannot do that. That's why we have to continue with this particular online thing. But that's the least imperfect solution. And that's still a good solution, I would say. There are so many students, especially in the rural side, who are staying in the semi-urban country places of India, who don't get stable internet connection. They are not able to access live lectures. At least you guys are able to access live lectures. Plus, you are able to get a facility of recorded lectures. What more you want? I think things are still doable. I know it gets a little boring. That's why you make a group of 4-5 friends, keep talking to each other, keep interacting, go to each other's houses once in a while, and then you will be able to navigate through the situation in a much better. This is all I can suggest. So IIT-PK doesn't have a diet plan, but all we can say is that eat lots of fruits, lots of greens, lot of high prana food. सात्विक खाना जितना खाएंगे उतना बच्चों को अच्छा. वैसे तो उनका यंग है, उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, वो तो हजम तो कुछ भी कर लेते हैं बच्चे. But at least 3 days before the exam, we have advised students not to have non-veg food, have vegetarian food, and avoid processed, salty, too spicy food at least 3 days before exams, because on the exam time, their presence of mind has to be very high for those 3 hours. And the ability to take that pressure becomes better if they have high prana food. और थोड़ा तमसिक राजसिक फूड खाएंगे तो इधर सिली मिस्टेक ज्यादा करेंगे, या दे विल गेट इनटू माइक्रो स्लीप्स ड्यूरिंग द एग्जाम एंड दैट कैन आल्सो अफेक्ट देयर मार्क्स. सो बेसिकली लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, लॉट्स ऑफ पल्सेस, लॉट्स ऑफ सीरियल्स, ये सब करेंगे तो अच्छा है. बाकी का ऐसा कोई, वी आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, so we will not give any diet plan as such.
Yeah, revision of previous lessons, I think I already given the plan. Syllabus is enough to crack the KVPY. Yes, whatever syllabus we are teaching is enough to crack the KVPY exam, the physics Olympiad exam, and the chemistry Olympiad exam. All these three exams are covered in our course only. And ये सारे exams around November के month में रहेंगे, and that time you can definitely attempt this particular stuff. How to stop procrastination in studies? Your willpower. Your willpower. And one more thing which we'll do now before phase 3 starts, around phase 3 starts, is that there will be lots of motivational videos which will also come from our side, from IIT-PK, so as to encourage students. Because मैं जानता हूँ अभी last 10 months online करने के बाद थोड़ा सा एक लल आया है, थोड़ा सा एक बच्चों का enthusiasm में एक downward curve आया है, तो उसको वापस उठाने का काम हम लोग करेंगे. I will also address students within the next 1 month or so. And at the same time, we'll also post a lot of motivational videos so that's to build up the morale and the confidence level and the enthusiasm level of the students. And ये जो results अभी आ रहे हैं बच्चों के जो 2021 के बैच के, they are also very encouraging, I must tell you, because despite the fact that they also went through this long 1 year long online coaching, they have delivered results आ रहे हैं उनको भी तो यही सब समस्याएं थी जो आपको अभी हो रही है. उन्होंने भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, ऑनलाइन ही चल रहा था, बहुत सारी चीजें मिस कर रहे थे, फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन दे हैव गॉन थ्रू दिस फेज एंड दे हैव क्रैक्ड इट. सो व्हाई कांट यू आल्सो डू इट? You can also do it, and I hope that within the next 2-3 months things will get normalized. ये पैंडेमिक का जो ऊपर का भी है जा रहा है, वो ऊपर जाके पीक आउट होके डाउन जाएगा, वो एक फिनोमिना है, तो दिस विल हैपन. एंड अगर वो हो जाता है एंड वी गेट आउट ऑफ द सिचुएशन बाय लेट्स से जून जुलाई, वी कैन स्टार्ट ऑफलाइन कोचिंग कंफर्टेबली. तब तक वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी. I hope, I'm optimistic that things will be back to normal by at least June, July. So we should be in a position to, we look forward for that also. So let's be hopeful, let's be optimistic. At the same time, whatever is coming to the online thing, we have to make do with it. We cannot expect the moon all the time. Yeah, we'll give you the analysis. That's one good question Mr. Katke is asking. Can you give us the success ratio percentage of M star, M, CSB, Masters and Achievers? We'll do that. Definitely do that. Right now, I don't have it offhandedly because we are waiting for all the 4 results, right? Because there are February, March, April and May. There are 4 JEE mains exams. Let all 4 get over. The best percentiles and the ranks will come, and then we'll give you the success ratios stream-wise. But I'll tell you one thing. Right now, we have our Apex. These batches don't exist now. Now, in the last 6 months, these batches are reorganized into Apex batch, Toppers batch, Rankers batch, National Colleges batch, and State Colleges batches. So we have found that the success ratio of the Apex and Toppers and the Rankers is much higher as compared to the National and State Colleges batches. So these Apex and Toppers batches में बच्चे जो select हुए हैं वो they have been selected from all the batches, Masters, Achievers, M Star, M and CSP. So in my opinion, like every year, there will be a fair representation of all the streams. But ultimately, it boils down to who is sincere and who is not. You can sit in M batch, but if you are sincere, you can crack it. And you can be in master stream, but you are not sincere and you will still not do it. So therefore, ultimately, it's about sincerity only. But we'll share the statistics with you, definitely. Once let all the 4 exams get over. My daughter is preparing for ICER exam. Very good. So physics, chemistry, maths is good. Biology, if you are joined us for biology, that's fine. Otherwise, you can refer to some other classes or you can study on your own. NCERT books से biology पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा for ICER entrance exam. बाकी physics, chemistry, maths में हम जो पढ़ा रहे हैं JEE advance के लिए, that is more than sufficient for ICER entrance. And आप KVPY भी crack कर सकते हो. KVPY crack करेंगे तो आपको directly ICER में admission मिल जाएगी. Yeah, I understand. If both parents are working, it's very difficult to keep an eye on the child. That is why I'm saying if you cannot keep an eye on the child, at least have a friendly dialogue with your child and let the child build a certain trust level with you. So वो trust को betray नहीं कर रहा है कि नहीं, ये आप अपने skill से उसको once in a while conversation कर करके आपको उसको track कर सकते हैं. So there is no need to actually for a child is sincere ना, वो अंदर से अगर committed और sincere है या उसने आपको आश्वासन दिया कि मैं करूँगा, so we should have faith and go ahead with it and then do some cross checks once in a while to understand whether it's really happening or not. तो वो आप skillfully अगर कर पाए तो भी you can ensure that the child is following our track or not. You are comparing our institute with online testing platforms like Unacademy, YouTube. See देखो Unacademy और YouTube में भी तो अच्छे teachers पढ़ाते हैं, YouTube में भी तो अच्छे teachers लोगों ने किए, but ये सब recorded है. Unacademy में live lectures है, लेकिन कितने सारे 15-20 teachers रहेंगे आपको.
So when there are so many different teachers and there is no sequential teaching happening of the entire program, you all get messed up. So we have also been we have launched a course on an academy platform on CET also. IIT-PK had launched a course on an academy also. 4 of our faculty members were teaching, including Devekar sir and Nilsson also on that. And we realized that it's such a mess. I mean, there are 15 teachers teaching the same thing and all are teaching different chapters, and there is no clarity about which chapters to teach first and then later. It's all a complete mess, and there is no proper assignment or testing system with respect to what was taught. So just once in a while to get a hang of a new teacher just to see that chapter, which you did not probably understand from our teacher, it's all right to refer to YouTube once in a while or another. That's no harm in it. But if you keep doing this and that simultaneously, then you will be messed up. So just follow one track, one teacher for one subject till you finish the syllabus. पूरा syllabus होने तक एक प्लेटफॉर्म रखो. उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कुछ मिल रहा है कि नहीं ये देखने के लिए आप 10 जगह और थोड़ा सा कुछ सर्फिंग करते हो और ढूंढते हो, कोई हर्ज नहीं है फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स. उसमें कोई बुरा नहीं है. बट अभी मत करो, लर्निंग स्टेज में मत करो. After you are doing the learning to get something extra for revision and for some value addition, कुछ ढूंढ रहे हो तो कोई हर्ज नहीं. हाँ, सो वो जूम बॉम्बिंग बोल रहे हो ना, स्पैमिंग बोल रहे हो ना कि sometimes somebody just enters the class and then writes some nasty comments in the Zoom board and all that. तो वो कभी कभी हो सकता है, but we have removed such students and we have that system when the child is removed then the child cannot come in. So we are monitoring whether all the students have logged in the same name or not. The batch is supposed to check that. कभी कभार कोई तो मिस हुआ होगा तो ये इंसिडेंट हो सकता है, but that's a one off again and please take it in your stride. ये इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हैकिंग भी होता है, सब कुछ होता है. All kinds of things happen in the technological world. You should be open for it. Don't expect an idealistic, perfect world. It doesn't happen. You have learned the second law of thermodynamics. It says that 100% perfection is not possible. So it's very clear. So second law of thermodynamics plays out everywhere. So if there is some imperfection you find, just smile and move ahead. Exception just proves the rule. Yeah. You will be having holidays from 1st to 8th April, but not for 11th standard exams. 11th standard exams hold no equity in our eyes. It doesn't have, you just to pass 11th standard just to get into 12th standard. It has no other significance as far as the child is concerned. And even for CBSE, for 11th standard, even if they say it's going to be given the status of a board exam, it has not materialized as yet. So therefore, पास तो हो जाएंगे 11th में. कौन सा कॉलेज फेल करने वाला है बच्चे को 11th में? No college has the guts today to do that, sir. Be rest assured. Government cannot afford even one failure. In fact, abhi I'm sharing with you some internal source. Somebody in the education ministry shared with me that probably within the next 2-3 days, the education minister might announce that 9th and 11th mein everybody should be passed. Blanket rule from Maharashtra government. This is likely to happen for all boards, state boards, CBSE within Maharashtra state. ये आने वाला है mostly. So don't worry, साल just चला गया है. You focus on JEE studies and things will just work out. Don't get too confused with these college kind of stuff. That is all going to be managed. And अगर 11th में fail भी होता है तो 12th में आपका एडमिशन करा देंगे हम जो हमारे टाई अप कॉलेज में. ये भी मैं आपको बोलता हूँ. ये भी अलाउड है सिस्टम में, लीगली अलाउड है. So everything is allowed in this system. You just don't worry. Just focus on the JEE. Everything will come out proper. नहीं, you don't have to sit 6 hours per day continuously ना. 2 hours पढ़ो, फिर बाद में ब्रेक ले लो, बाद में वापस 2 घंटा पढ़ो. ऐसा करके 6 घंटा दिन में हुआ तो भी ठीक है. तो 6 घंटा करने में चैलेंज हो रहा है तो फिर अगर आप 2-2 घंटे नहीं बैठ सक रहे हैं तो स्टार्ट करो 1.5 घंटा बैठ के 4 सेशंस में. एक टाइम टेबल बनाओ और उसको स्टिक करना जरूरी है. और अगर वंस इन ए व्हाइल उस टाइम टेबल को ब्रेक करते हो तो हर्ज नहीं है, बट बाय एंड लार्ज दैट हैज टू बी देयर. तो अगेन दिस बॉइल्स डाउन टू विल पावर. अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, मन बहुत विचलित है, 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, एक जगह पे ज्यादा नहीं बैठ पा रहे, तो जो यस प्रोग्राम मैंने बताया उसको कराओ. कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मन कहीं ना कहीं शांत होगा, बैठक बढ़ेगी, पढ़ाई बढ़ेगा, मार्क्स फिर अच्छे हो जाएंगे. तो ये भी तरीका है. चाइल्ड को माइंड में उतना एजिटेशन अंदर है, काफी सारा रजस है, तो उसको बाहर निकालने का ही तरीका है. एंड द चाइल्ड इज नॉट डूइंग एनी 1 hour फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी, उसकी वजह से भी हो सकता है. The child is sitting all the day, just sitting and sleeping full day, ज्यादा वॉक नहीं, कोई फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी नहीं है, उस वजह से भी काफी बार बच्चे 6-6 घंटा पढ़ने में तकलीफ महसूस करते हैं, या फिर बैठक नहीं होती, या फोकस नहीं रहता, या कंसंट्रेशन नहीं रहता. तो ये हो सकता है.
तो ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। नहीं, if the child has missed the 30 days का recording part, then we cannot give you the recordings of those lectures again, but you will have to wait for the revision sessions when we will be giving you access to the entire syllabus के video lectures. This is possible. देखिए, आप सोचिए, अगर बच्चा ऑफलाइन के लिए क्लासेस में आता हमारे, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता, तो वहां पे कहाँ रिकॉर्डिंग मिलने वाला था? वो तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं मिलने वाला था। प्लस अगर बच्चा एब्सेंट रह जाता था ऑफलाइन क्लासेस में, तो कहाँ रिकवरी के लिए हम लोग आपको और एक लेक्चर अटेंड करने के लिए देने वाले थे? नहीं, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. So if you miss something, you have to take ownership of that, what you have missed. Refer to notes of students, try to understand yourself and try to cope up. At least now you have recorded sessions available to do that as well. So let's do that and utilize these facilities. There are 3 books from IIT-PK recommended books. No, we have given many more books. For recommended books many हैं, उससे ज़्यादा है. अब देखो, और हमने भी 7 books दिए अभी तक, उसको रेफर करो. Okay, so I think most of the questions I have covered. Yeah, JEE exam is likely to be held 4 times next year. True. So ये 4 बार जो ये साल हो रही है, this is an experiment, but next year से वो 4 बार कब होगी ये पता नहीं है. Will it be held in January, in February, March, April, when it is going to be held throughout the year? 4 बार होगी या 5 बार होगी, that we don't know. But 4 times it will happen next year also. Yes, you will have 4 opportunities. You can write 4 times and improve your scores, and the best of the 4 attempts will be taken as a final score. Yes, that is going to happen. See, if your child has not done foundation in 8th, 9th, 10th, that doesn't mean that it is because of that the child is not able to understand. अभी जो M star, M और CS में जो बच्चे बैठे हैं ना, ये सब freshers हैं. इन्होंने किसी ने भी IIT फाउंडेशन 8th, 9th, 10th में नहीं किया था, तो उनको समझ में आ रहा है. मतलब कहीं ना कहीं बच्चे ने अगर मेहनत करी, सिंसियरिटी दिखाई, तो उसको समझ में आएगा. Ask him to pay more attention in the class. और क्लास में अगर उसका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है, तो जो यस प्रोग्राम मैंने बताया वो करवाओ. उसका धीरे धीरे मन शांत होगा, एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन होगा, and then also the child will be able to cope up with that. So these are some of the solutions which we can offer from our side, but ultimately it depends on the child, it depends on the willpower of the child, depends on the self effort of the child, and then only it will happen. Yeah. So there are some suggestions if anybody else has of some different online platforms. ये क्यों नहीं use करते, वो नहीं क्यों use करते. I think this system which we are having is one of the best in the country. We are using multiple online platforms. इसके आगे we are going to give you access to the Mbibe artificial intelligence driven platform is also fantastic. So ये सब करने से results आते हैं. So there is no reason for us to change this system because it's delivering results as has been seen in the 2021 batch already. हमारे 9 बच्चों ने KVPY भी क्रैक मारा है इस बार, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं. We have got excellent ranks in the KVPY exam as well. So it's working. Where is the question of wanting to अभी कुछ नया ऐप करेंगे, ये करने की जरूरत है, आवश्यकता नहीं लग रही मुझे. तो currently there is no lacuna as such which we are sensing in the current systems we are using, so we'll definitely do that. Okay. My daughter is in. See, I think whatever chapters we are teaching, what we plan to teach, कौन से चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं, कौन से फ्लो में पढ़ा रहे हैं, ये ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने पोस्ट किया है. पूरा कोर्स फ्लो चार्ट हमने पोस्ट किया है, ईआरपी साइट पे भी पोस्ट किया है. आप ईआरपी साइट कृपया करके देखिए, वो सारे आपको मिल जाएगा पोस्ट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, आई थिंक देयर आर सम parents who are have raised hands also. They have some questions, so please let me just ask them to speak out. Mr. Latpate, you have a question, so I will ask you to unmute yourself. So please unmute and speak out. But my request is the question should be not pertaining specifically about your own child. It should be of a general nature which I can address in this general parents meeting. If there is a question about your own child in particular, then those questions you can email me and then we can have a separate discussion on that. But if it is a question of a generalized nature, then please ask. Yeah, Mr. Latpati, go ahead. You can unmute yourself. नहीं हो रहा है आपका? Okay, Mr. Pan. Yeah, go ahead.
Yeah, sorry, I was actually on the another call. कोई But बात I नहीं. think it was like very wonderful session and guidance from you, sir. Okay. So thank you for that. Actually, Okay. Welcome. actually, I think many of the questions you already answered on that. Okay. So mostly I don't have, but sometimes what happens like students say something to us, and they don't give the actual feedback. So I just want to have some like you already said that you have the coordinator and class coordinator. So I think we can talk to them like how our student is performing and whether she or her he is asking the questions or not. So I think that can be done actually. So apart from that, I think I don't have any questions, sir. नहीं, वो तो हम लोग ने दिया है फैसिलिटी आपको, और ईआरपी साइट में हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप में जो पोस्ट मैसेजेस पोस्ट करते हैं वो सारे मैसेजेस हम ईआरपी साइट में भी आपके लिए डाले हैं, तो आपको बस पता चल Yes. सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और अगर आपको कुछ शंका है, क्वेश्चन है, तो आप Mhm. कोऑर्डिनेटर से बात करो या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो या academics@iitpk.com में ईमेल लिखो, एंड विल डेफिनेटली बी Okay. एबल टू हेल्प यू आउट. या मिस्टर Okay. पंडित. Okay, sir. ओके. मिस्टर पंडित Thank राव, you, sir. आपको कुछ क्वेश्चन है? Yes, just wanted to know Yeah. that when students are doing these assignments, right? There are assignments given to the students. So, can they refer to the books and then do the assignments, or they're not supposed to look at the books and do it without any help? I mean, No. what is the process for them to follow in completing their assignments? In the assignments, we are encouraging students to discuss with each other, to refer to books, to refer to the internet, do whatever. So basically, in the process of finding the answer, the only expectation we have is when you finally write an answer, they should have the conviction why this answer has been arrived at. If they were able to crack it themselves, well and good. But otherwise, even by referring to some resources, they're able to get the answer, or by discussing with friends, they're able to get the answer. It's all right. As long as they know why this answer has been put, what is the detailed solution, and they're convinced about the solution, the purpose of doing the assignment is served. As far as the test is concerned, obviously they should not talk to anybody, they should not refer anything, they should not use the internet for finding the answer. ये सब चीज expected है. But for assignments, they should they can refer to. It's like an open book test. Even not just an open book test. Even they can discuss with anybody. We are just wanting them to stay clued in with respect to that topic and those concepts, so that they explore the concepts in whichever way. So it's okay if they are not able to crack those questions themselves. Assignment is just a way to stay tuned to that topic, and they kind of remain in the mind space of that topic somewhere. So this is the basic purpose of it, and as long as they write the answers and after that they refer to the solutions and learn out of those solutions, the purpose of the assignment gets served. It helps in a very subtle way. It helps the student to perform eventually well in the test. एंड बाद में जब 41 ईयर्स के क्वेश्चन जब खुद सॉल्व करेंगे टाइम बाउंड प्रैक्टिस से, वहां पे तो उनको पता ही है कि वी हैव टू सॉल्व इट आवरसेल्व्स. And if you don't see this, get the solution within the stipulated time. Objective questions के लिए 5 minutes, subjective question 15 minutes, then they can see the solution. So this is basically what we are expecting the students to do. Yeah. Yeah, Mr. Devre, you have a question? Please go ahead. Sir, I am Sanket Devre from CSB3. No, you are a student or you are a parent? Yeah, I am a student. No, this Sir, is not for you. This is a parents meeting. Parents are supposed to speak, not students. Mr. Bangle. Yeah, sir, I have a question. Yeah. That suppose the earlier chapters are not clear to the student, will he face the issue in the latest chapters? And how to cover that? Because now that recorded lectures are also not available. So how he can focus on that? Because whenever we discuss with him, he's saying that because earlier lectures are not clear, I am not able to focus on latest thing. I think this can be an issue for other students also. So I just wanted to ask you in open forum. देखिए, ऐसा है कि अभी जो करंटली जो चल रहा है, अभी हमने भी बच्चों को यही एडवाइस किया है कि करंट टॉपिक्स के साथ रहिए, राइट? तो करंट टॉपिक्स में जब पढ़ते वक्त कोई तो कंसेप्ट आ जाता है विच हैज अ रेफरेंस विद सम पास्ट टॉपिक, तो जो कंसेप्ट उसमें जो आ रहा है जो समझ में नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, उसमें सपोज कोई फोर्स डायनामिक्स का कोई कंसेप्ट आ गया, कोई फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया जो पहले पढ़ा चुके हैं, तो बस उसी कंसेप्ट को वापस आप रेफर कर सकते हो. Now, even if there is no lecture available, but still they have video solutions of the ICE
book available for that chapter. तो अगर वो उस चैप्टर का फ्रिक्शन का एक 8-10 क्वेश्चन आइस में सॉल्व किए हैं, वो भी अगर वो देख लेते हैं वीडियो सॉल्यूशन, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है. या फिर एचसी वर्मा का बुक है, आपको जो थियरी बुक है उसको पढ़ेंगे, जो लेक्चर नोट्स बच्चे ने बनाए होंगे उसको रेफर करेंगे, तो भी काफी बार रिकलेक्ट हो जाता है. और अगर ये सब के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो डीडीएस सेशंस में रुकना पड़ेगा. उस समय ये रेज कर सकते हैं इशू, एंड 1-to-1 वो पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं. So these are the different ways by which you have to do it. But ये ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया या मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, ये तो नहीं होगा. Unless the child has been extremely insincere while that the topic was done. और अगर वैसी बात है कि बहुत ही इनसिंसियर था, कुछ भी नहीं सुना, बहुत ही कैजुअल था बच्चा, तो obviously the child will have to pay the price for it by putting in more efforts now, by referring to the books, by referring to certain stuff. But वो जो वीडियो सॉल्यूशंस हमने जो अपलोड करके रखे हैं आइस के, वो तो हमने डिलीट नहीं किए हैं, वो सारे चैप्टर्स के. उसमें क्या किया है हमने, आइस ऐसे है कि उसमें एक एवरी चैप्टर में अराउंड 20-30 क्वेश्चंस हमने ऐसे चूज किए हैं विच आर ऑफ अ बेसिक टाइप, उससे कंसेप्ट क्लियर होता है. और उस टॉपिक के जो भी 8-10 कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमने डाले हैं. तो यदि कोई कंसेप्ट बच्चे का अटक रहा है ना, तो he can go back to the ICE video solutions and refer to those 2-3 solved questions. इससे भी काफी बार वो आइडिया क्लियर हो जाता है. So this is the way to do it. But बहुत ज्यादा अगर है कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, कुछ भी ये नहीं किया था, then there is no easy solution for such question. हाँ, but यदि थोड़ा सा हल्का सा भूल गए हम, या थोड़ा सा उस समय वो कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ था, ऐसा इशू है फॉर अ फ्यू कंसेप्ट, then you can refer back. You can also read the theory book. Theory book में पढ़ के भी समझता है. पहले तो कहाँ था ये सब वीडियो लेक्चर वगैरह. पहले के जमाने में सारे बच्चे आए, जमाने मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले के सब बच्चों ने पढ़ाई कैसे किया है? उन्होंने तो बुक्स पढ़ पढ़ के किया है. तभी तो ना कोई रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, तभी कोई यूट्यूब था ना, तभी कोई इंटरनेट था. तो अभी बच्चों को सिर्फ वीडियो से ही समझता है, सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं समझता है, ये इशू आने लगा है. तो कुछ चीजें थोड़े पढ़ के भी समझ जाएंगे, कुछ चीजें वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ में आएंगे. और सपोज वैसे भी प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो यूट्यूब में जाके उस टॉपिक पर डालो. खान एकेडमी इज अ गुड रिसोर्स. खान एकेडमी में डालो, उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको एक 10 मिनट 15 मिनट का एक फोकस्ड लेक्चर मिल जाएगा बेसिक क्लियर करने के लिए. उससे भी हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है. ऐसे सिचुएशंस में इसका यूज कर सकते हैं. This is what I can possibly suggest. Yeah, Mr. Dharmadekari, you have a question? Okay. Thank you, sir. Yeah, go ahead. Mr. Dharmadekari, आपको कोई क्वेश्चन है? Yeah, my question is actually I had put it already on the अच्छा, हो गया क्या क्लियर? chat. No, but I'd like to repeat it. Sure. For the question, first question is almost 10 months have passed on for your online lectures and this session. But now my ward, and maybe it's a general question that other students must be also feeling. Now they are getting bored for the online sessions and waiting for offline session. As you already and rightly mentioned, that mingling with the students is a good sessions for sharing the informal sharing as well as sharing the questions. So yeah, there is a pandemic situation, but definitely whether you are planning to conduct offline session, this is the first question. And the second question is the looking at the percentile that has come in the latest online exams. There is a drastic difference compared to the last few, I think 6 or 7 exams. So what is your advice to the students as well as for the parents? Thank you. Yeah. So we are identifying certain students whose average performance in the unproctored test and the proctored test, there is a stark difference. उसका एक list हम लोग बनाए हैं, and that we are going to be talking to parents and students in the next 2 weeks. So let me answer that second question first, because the first question मैंने already बताया है कि June July is the ballpark date when we are expecting that the offline sessions should resume. Till that time, this pandemic will continue to create havoc and it will be difficult to start offline sessions. But as far as the second part is concerned, as I mentioned, that we should be in a position to, identify these students. Once we identify these students, we will try to understand the reasons for it. But I tell you, the major reason would be that some kind of unfair practice, malpractice, was being used by the child in the unproctored test. This is a very likely situation to happen because ये उम्र भी ऐसी है और ये टेंडेंसी हो जाती है, and it is an infectious thing.
some child has this idea that he does it, he shares it with his friends, and everybody catches on. And there is somewhere there is a competition going on, ranks, percentiles, and this and that, spark batch, and this and that. तो उसमें कहीं ना कहीं वो मिलने के लिए children do get into that trap. That's why we have started live proctor tests. So even if that has happened, we shouldn't bother too much about it. We shouldn't blame them for it, but we should understand that this phenomena may have happened with your child, and we should forgive them and take an assurance from them that in the future tests you're going to be sincere, you're going to work hard and not indulge in any unfair practices. This is one possibility. Second possibility is because it was a proctored test, maybe they got little tensed, little nervous, and that's why they scored very poor. If that is the case, also they shouldn't worry too much because not already they have given one test. Just as an unproctored test, they should give it like a normal thing if they were not indulging in any unfair practices, and then again their performance will come back to the original level. So if it was just that they got too nervous and too tensed because it was a proctored test and they felt too conscious and that's why they underperformed, that I think they'll get used to that phenomena, and subsequent tests will see an upsurge in their score performances also. But if they were doing unfair practices and that's how the score was going up earlier and now it's showing the real score, then we should ask the child to stand corrected and to follow an honest way to in the future, so that this issue doesn't escalate later and creates more complications later. So I think this is basically what I can suggest. I know Yeah, that thank you. I know that there is a difficult situation for children, but I tell you that as the situation improves in the next 2-3 months and offline session starts, a lot of ice breaking will happen, and then the whole atmosphere will become far more positive from an external standpoint also. In the meanwhile, what I would request parents and students also is that you bond together with each other, identify 4-5 friends which you can make within your group or outside your batch also, and then maybe have some exchanges, have some get-togethers with each other, and see if you can bond well amongst each other. But we can't really do this now at this situation. Or you can suggest me ideas, and I'm open for ideas what we can do to improve the situation as far as the emotional well-being of the child is concerned. We have suggested the yes course for sure. That also helps to build up the child's energy levels and makes it more positive. But beyond that, what else can we do? You can also suggest. We'll definitely discuss it amongst ourselves and implement some of the good ideas possible. Yes, Nehal Joshi, madam, if you have anything to say. Yeah, good evening. Actually, just one question, sir. The students who got admission late, who was missed the first foundation sessions and who got admitted late, how do you suggest for them to come? Am I audible? Sorry. Yeah, you are audible. Go ahead. Sorry. Okay. So my question, sir, was the student who got late admission IIT-PK, how do you, is there any chance for them to get that basic foundation courses again, some rundown for them, because as a result somewhere they are scoring low. I'm not sure how we can address this issue. See, देखिए, in the current world of competitions, unfortunately ऐसा है कि जो भी डिले हम करते हैं ना, we have to pay a price for it somewhere. So अभी इतना, yeah, price is that a child will have to put more efforts. And I already told you that there are different resources which we have made available, like video solutions of ICE book questions. We have also been sharing the recordings for the last 30 days. And in some of the batches, we have got recordings of even further dates also. So, what you could just do is that कौन से chapters का आपको issue लग रहा है, ये आप एक email लिखिए academics@iitpk.com में, and we will provide you some resources on email so that the child can cope up with those kind of topics. Okay? पर आप बोलेंगे कि पूरा फाउंडेशन नहीं हुआ है, तो भी कोई हर्ज नहीं. फाउंडेशन में जो टॉपिक्स हुए हैं उसी को तो हमने phase 2 से रिवाइज किया है. So all those foundation chapters we have revised and taken enhanced to JE level. That's what basically we have been doing in the phase 2 onwards. So ऐसा नहीं कि उसने कोई totally miss किया है कोई टॉपिक और. हाँ, हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स थोड़े फेज 2 में रिवीजन करते वक्त थोड़ा फास्ट गए होंगे, इसकी वजह से वो पहले का चैप्टर समझ में नहीं आया हुआ, नहीं सीखा था तो समझ में नहीं आया अभी, ये हो सकता है. बट I think there are solutions for it. So you just identify which chapters में दिक्कत आ रही है बच्चे को and write an email to us and we'll provide topic to topic solution for you. That would be a better way to address it because ऐसे कोई blanket solution तो नहीं है.
बस इतना ही है कि सारे चैप्टर्स हमारे फेज 1 गाइड में है, उसको पढ़िए, खुद समझने का कोशिश कीजिए, जो डाउट्स आते हैं वो डाउट फोरम में डालिए या डीडीएस सेशन में पूछिए, बस इसके बियॉन्ड और कुछ हो नहीं सकता। या अमेय पाटिल, आप बात करिए। हेलो सर, बाला साहेब पाटिल बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार। सर, आईआईटीपी अब्रॉड और फॉरेन इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स के लिए जी भी हमें गाइड कर सकते हैं। यस। और सेकंड एक क्वेश्चन ये था कि बच्चे अभी घर पे ही है, तो आपने जो बुक्स रेफर किए हैं उसमें से हर दिन उन्होंने कम से कम 60 क्वेश्चंस वगैरह ऐसा करने चाहिए, तो थोड़ा उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, वो हमने बुक्स ऐसा को कोई कम टारगेट हाथ नहीं लगाते दिया। हैं। ओके, हमने ऐसा कोई हाँ, टारगेट नहीं दिया है कि 60 क्वेश्चंस हाँ, करो या 100 क्वेश्चंस करो, ऐसा टारगेट नहीं दिया है। हमने टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, 6 घंटा पढ़ने के लिए कहा है। वो 6 घंटे में ओके, जितना भी हो सके उतना ठीक है। तो ये प्रेशर मत ओके, डालो कि इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी कोई रिवीजन फेज ओके, नहीं है कि 50 क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चंस करो। अभी ओके, right now they should be studying for 6 hours, solving या, questions for out of 6 hours at least 5 hours, remaining 1 hour थोड़ा थियरी पढ़ लिया, थोड़ा कुछ और देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जी, सॉल्विंग 6 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं इतना देखो, वो टारगेट मत रखो कि कितने क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज वन। ओके, ओके, फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का ये था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई में वी हैव अ फॉरेन यूनिवर्सिटीज डेस्क, और फॉरेन यूनिवर्सिटी डेस्क के अंतर्गत हम काफी सारे वेबिनार्स पेरेंट्स के लिए अरेंज करने वाले हैं, वो आप अटेंड करिए और उससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जर्मनी में, यूएस में, सिंगापुर में, इसराइल में ये यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कैसे करना है, कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज है, व्हाट इज द प्रोसीजर वगैरह वगैरह। उसको अटेंड करिए एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन एंड गेट एडमिशन टू दिस वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो टिपिकली अप्रैल एंड से मोस्टली शुरू होगा या मई से शुरू होगा। मई, जून, जुलाई में हम लोग ये वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल करते हैं, आपके साल भी करेंगे, आपके लिए भी करेंगे। या ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मिस्टर देशपांडे, अमित देशपांडे जी बात कर रहे हैं, आप बात करिए। Sir, so question is, if one nation, one entrance exam is implemented starting 2022, will there be no entrance exams even for colleges like Vellore or BITS also? हाँ, मतलब this exam will be giving will be the basis for admission to Vellore and all that also. See, देखो, one nation one exam has already been implemented in medical stream. मेडिकल के स्ट्रीम में भी there were 28 entrance exams till 2016. But once the one nation one exam policy was implemented from 2017, by 2019 even AIIMS and JIPMER also came in the NEET system. So today all the 542 medical colleges ka admission is only on the basis of NEET for all medical courses, for all paramedical courses. Likewise, इंजीनियरिंग में भी 3300 ऑड कॉलेजेस आर देयर इन द कंट्री, उनका सारा एडमिशन ये जेई मेंस जैसे ही कोई तो परीक्षा का एक नाम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सजेस्ट किया है वो नीति नाम है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। मे बी नीति विल बी देयर और सम नेम मैच चेंज, बट बाय एंड लार्ज इट विल बी लाइक जेई मेंस। ओनली द आईआईटीज हैव फियर्सली मेंटेन्ड that we will continue to do JEE Advanced. We don't want to be merged with the rest of the engineering colleges. This is the stand of IITs as of now. यही स्टैंड एम्स ने भी लिया था 2017 में. So AIIMS used to be a separate entrance exam in 2017 and 18, but from 2019 AIIMS also merged with the NEET system. So likewise, maybe IITs after 2-3 years might merge with the single national exam, but we don't know. But at least immediately 2022 में we should expect the IITs should continue to be JEE Advanced and rest of the colleges to have only one exam, which will be conducted multiple times in a year, and the best attempt will be taken as the final attempt. Okay, so will it be applicable for ISER as well, or is it going to be not for ISER? Yeah, it's for pure sciences, engineering, and architecture. This is what they are contemplating. So therefore, ISER also will get covered in that. Okay, thank you, sir. Mr. Uday Pujari, जी आप बात करेंगे? I have 5 more minutes and then I'm winding up, okay? Because it's been a long meeting for us. हेलो सर, गुड इवनिंग। Very good evening. Yeah. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि चैप्टर वाइज कोई मार्क्स डिफाइन किए गए या कौन से चैप्टर को कितना फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जेई एडवांस में 3-4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो बेसिकली कंसेप्चुअल कंटिन्यूटी एंड इंटर रिलेशन यही इसी से पढ़ना होता है. ये थोड़ा अलग तरह का तरीके का पढ़ाई है. तो इसमें इस चैप्टर को इतना वेटेज है, उस चैप्टर को उतना वेटेज है, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है. तो हाँ, ये जरूर है कि कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस अधिक पाए गए हैं जेई के एग्जाम में लास्ट 10-20 ईयर्स में,
तो ऑब्वियसली ये टॉपिक्स हम बच्चों को बताएंगे, बट अभी नहीं बताएंगे। अक्टूबर तक उनको सभी चैप्टर्स को पढ़ने दीजिए, लर्निंग स्टेज है, सब पढ़ने दीजिए। फिर आफ्टर दैट, फिर जब रिवीजन फेस आएगा नवंबर से, तब हम बच्चों को अपने आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन से वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन से वीक टॉपिक्स को वीक ही रहने देना है, ये हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है खुद का, ये सब समझाएंगे। तो वो सब स्टडी स्ट्रेटेजी, एग्जाम स्ट्रेटेजी, गेसिंग स्ट्रेटेजी, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, एग्जाम टेम्परामेंट, ये एक अलग सब्जेक्ट्स है। वो टिपिकली हम फेज 4 फेज 5 में बच्चों को बताते हैं। अभी फेज 3 के एंड तक पहले सिलेबस कंप्लीट करें, पहले मैथमेटिकली कंसेप्चुअली सारे चैप्टर्स को ग्रिप में लाए, इसी पर हमारा फोकस अभी रहेगा। तो इससे हो जाता है। ओके, थैंक यू। यस यस। मिस्टर शिम्पी, उमेश शिम्पी जी, आप बात करिए। Hello, sir. Yes. So whatever monthly tests are happening, so students are getting answers next day, and they are just analyzing answers with their concepts and all. So what I am suggesting, it is better that all 75 questions will be discussed maybe next Sunday by teachers, and they will discuss answers, and student will get to know what mistakes they did and kind of. एक्चुअली ऐसा है, आंसर्स ही नहीं सिर्फ होते हैं, आंसर्स के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। दूसरी बात, सपोज संडे को एग्जाम हुआ ना, तो नेक्स्ट संडे की राह देखने की जरूरत नहीं, उसी नेक्स्ट वीक में उस टेस्ट में आए हुए जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो टीचर डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, बताया नहीं कि आपको बच्चे ने। तो हाँ, I thought all 75 will be नहीं, ऑल 75 नहीं डिस्कस करते, कोई जरूरत नहीं है। उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, वो क्लास में डिस्कस करते हैं टीचर्स। yeah. और डिटेल सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, सिर्फ आंसर की नहीं दिया जा रहा है। तो दैट शुड बी रेफर्ड। सो लास्ट क्वेश्चन मिस्टर काटके जी बात करेंगे, हेमंत काटके जी, आप बात करें। हेलो। यस। या thank you, sir. Like I put my question in the chat window also, but I will ask again. Sure. Does like what I understood, like sometimes student will give the question answer for the last 10 question in 5 minutes or 10 minutes. He may apply some rule like just give A for all the 10 questions. And it may possible that okay, out of 10, 4 are correct. So he is going to secure, like get 4 into 4, 16 marks, and if 6 are wrong, still he is in the positive side, right? He will be getting 10. So like does when we do the analysis, ideally we should consider this like if student has appeared some questions in last 5 minutes or 10 minutes, that should not be considered in the performance, or it's whether he is good or bad in the subject. नहीं, देखिए ये बराबर है, लेकिन ये तो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात हो गई, विच द चाइल्ड हैज टू फिगर आउट हिमसेल्फ। तो अगर उसको लास्ट 5-10 मिनट्स में वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्क्स मिला रहा है, सो उसको समझ में आना चाहिए कि ही शुड नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इन अ हरी, अनलेस ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ये नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम है, ही शुड नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, बिकॉज फाइनली हम लोग जब इवैल्यूएट करेंगे तो वी कैन नॉट नो ना वेदर द चाइल्ड हैज अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली और वेदर ही हैज गेस्ड दैट क्वेश्चन और रैंडमली डन दैट क्वेश्चन। ये बात तो हमको समझ में आएगी नहीं, मतलब इवन एनालिटिक्स विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट। No, because in between, like in the presentation, you said like you are going to have further like best models, like which will give okay how much time he has spent on the certain question, whether he spent 5 minutes or 2 minutes or 1 minute. Yes. So what I'm saying, in the last 10 minutes, if he is appearing 10 questions, that means he is just giving 1 minute for each question, and he is giving like he is applying some thumb rule, like just say A for the all 10 questions. मैं वही कह रहा हूँ, ये एक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात हो गई, तो हम लोग उसको फिर कम वेटेज देंगे ऐसा नहीं होगा। देखिए ये सारा, लेट्स बी वेरी क्लियर, अल्टीमेटली जेईई मेंस में रैंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब मार्क्स कैसे लाने पड़ेंगे, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस अब एग्जाम में आए हैं वो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? क्या नहीं मिलते। क्या आप सॉल्व करके आंसर लाए करेक्टली तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या गेस करके करेक्टली आंसर लाए तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? क्या ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल इतना ही है, जो जीता वही सिकंदर। सो अल्टीमेटली आपने करेक्ट आंसर लाया बाय हुक और बाय क्रुक तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ये बेसिकली रूल है ना गेम का, तो एग्जाम का फाइनल रूल भी यही है। तो हमारे टेस्ट में भी इवैल्यूएशन वही होगा। हाँ, अभी बच्चे के लेवल पे ही शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो जो 10 मिनट में मैंने जो फास्ट अटेम्प्ट किए उसको आप इग्नोर करो, बाकी का मेरा रियल पोटेंशियल है। ये एग्जाम्स बच्चे का रियल पोटेंशियल अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से मैप नहीं कर पाते। आपने जैसे अभी जो फ्लॉ निकाला है बराबर है, ये तो ऐसे सिचुएशन होंगे, बट हमको क्या समझना है कि अल्टीमेटली फाइनल मार्क्स ही मैटर कर रहे हैं ना। और अगर फाइनल मार्क्स मैटर कर रहे हैं
और यदि लास्ट के 10-15 मिनट में मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में कुछ अटेम्प्ट करने से मार्क्स गमा रहा हूँ, तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी. आई शुड ओनली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट. तो इसका एक रैशनलाइजेशन बच्चे ने अपने लेवल पे अगर कर लिया, तो जो भी उसको मार्क्स मिल रहे हैं दैट विल बी मोर रिफ्लेक्टिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ट्रू पोटेंशियल. ऐसा मैं समझता हूँ. तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. तो देयरफॉर हमारी तरफ से कोई उसको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, because real exam में ऐसा नहीं होगा. Sometimes it happens that he may get negative marks. Sometimes it may be positive marks also, because हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है. तो वो एक एबेरेशन है. तो इसलिए बच्चे को अगर अपना ट्रू पोटेंशियल जानना है, तो उसने ऑनेस्टली जो कर सकता है, क्रैक कर सकता है, वही अटेम्प्ट करना है, बाकी छोड़ देना है. तो उसको उसका रियल पोटेंशियल पता चल जाएगा. ऐसा मैं आपको कहूंगा. फॉर एटलीस्ट फॉर दिस मंथली टेस्ट टिल अक्टूबर उसको यही पॉलिसी अच्छा रहेगा. बाद में हम उसको भी गेसिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे. देयर आर मेनी गेसिंग स्ट्रेटेजीज व्हिच आर वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट. उससे करेक्ट आंसर्स आते हैं. तो वो सब दोनों एम्प्लॉय करके अपने मार्क्स बढ़ाए. वो बाद में नवंबर से देखेंगे. अभी फिलहाल एटलीस्ट अपने आप को ऑनेस्ट रहे और वो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ऐसा मेरा सजेशन है. Yeah, thank you. I think this message you can give it to students also, हाँ, so that देंगे. they आज don't जो भी have, मैंने बताया है ना, वो उसको वापस में रिटेरेट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के yeah, साथ. because they should not do the like just attempt all the questions in last 10 minutes. I agree. Absolutely. Thank you. Okay. All right. So I think we have addressed a large number of questions. I'm sorry if I have not answered few of them, but you have my email ID. You can directly shoot your questions to me also in case there was something very critical which I missed today. It has been a long session for 3 hours, so I think now I will be closing the session today. So thank you very much for your presence, and be rest assured of our best services. Our attention is all on the students, and we'll take good care, and we'll make sure that whatever may be the circumstances, we are with the child till the end, till the entrance exams get over, till the results come out, and till the child gets a seat in the college. This is our commitment from IIT-PK, and we are committed to ensure the child gets admission in an A+ or an A grade college. From your side, please ensure that the child keeps studying, is in good spirits,